umpires, Kiran, along with me, proud owner and captain of Turf Blasters, Suchit Jairaj Shah, along with his son Vihan. Then we have got Kavish Zaveri representing SK Strikers, who is the skipper and also committee member this year. He got inducted. Asit Bhai Shah, one of the finest cricketers that I have seen, and a player from Turf Blasters, and one of the proud organizing committee member. We have got Mamta Shah representing White Divine, who are ceremony, and this is going to be a good friend. So Kavish, oh, rather it is tails. Beating bounce back. Yeah, you look good at 8 points, plus your net run rate also is in plus. I think nothing to worry as of now. But having said that, are you going to retain the same winning combination, or there will be some changes? So, Kavish, I think there is no bigger side match, and especially after a couple of months, the way SK Striker struck in the last made everyone that you guys are a force to reckon with. Decision you would have taken, the toss would have gone on your side. No, we were thinking to both. Yeah, thank you so much. Dear friends, news from the middle is Suchit has won the toss and they will be to bat first. The match goes live in a short while from now. Till then, stay tuned.
You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy. You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy. You know, I like my things personalized. Here's how I do it.
That easy. You know, I like my things personalized. Here's how I do it. You know, I like my things personalized. Here's how I do it.
It's that easy. You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy. Hello, check. Good
morning, all the viewers, and welcome to Kavirni Sports Arena at Link Road, Borivali West, Mumbai. The occasion is big. Sixth day, match number 11 of Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5. Toss won by Turf Blasters, and they have invited SK Strikers to bat first. Vilas Salvi will be bowling from the SK club end. A perfect Yorker to start. Suchit Jairaj Shah normally bowls the first over, but today he is in the wicket-keeper's role. They have got Smeet Shah, who is at Whitish Gully, and then they've got a point, short extra cover, where they have got Manish, and then they have got Maulik at mid-off. Vilas Salvi is known to have produced some of the magical deliveries last season as well and this season as well. He has already won a Man of the Match award under his belt. Nicely driven but equally fielded well by Manish. Good thing is the stroke was placed towards the left side of Manish, who is a lefty thrower, and hence just one run. So first run on the board from Harshal Shah. He is joined in by his partner Rishit Shah. Righty-lefty combination. Officials for this match are Kiran Purandare, who is at the bowler's end. Prathamesh Angne is at the striker's end. Scorer is Satish Singh. And the entire photography is done by Saurabh Banej. We are thankful to Sri Patan Jain Mandal. Without whose cooperation, we could not have put up a brilliant show like this. Leaning forward, driving it well. Vilas Salvi, popularly known as Wali Bhai, one of the senior cricketers. So another single. Two runs without loss, both the batsmen on one apiece. And now Manit, the wicket keeper. Suchit is at first slip. Just opening the face of the bat, and the ball travels towards Nirav Mahendra Shah, who picks up the ball. And Wali finishes first over. A quiet one. 3 without loss. We are thankful to all our sponsors. Our trophy is sponsored by Healthy Crunch, by Monica Shah. Wickets sponsored by Smith Engineering Company. Maximum Success by Patni Opticians. Team Player Award sponsored by Selfie Design. Man of the Series by MT Madan and Company. Medical sponsors Healing Pharma Private Limited. Your health is our world. Jerseys and kits are sponsored by JP Hairpins. Goodies by Warmio, Love Freshly Served. Hydrating sponsor White Divine. Broadcasting sponsor Philco Trade Center Private Limited. Balls sponsored by Allied Digital. IT managed responsibly. Boundaries sponsored by V Jewels. Jewels by Varsha Exports. App and Man of the Match sponsor SK. We serve since 1932. And Catch of the Match sponsored by Trinity Entertainment. Suchit Jairaj Shah to bowl the second over from the Gorai Creek end. And he'll be bowling to Harshal Shah. Harshal on 2, Rishit Ketan Shah on 1. Match number 11. This time square cutting it, but finds Smith. Smith has fielded brilliantly in last 2 seasons. And no wonder last year he got rewarded with Emerging Player of the League award.
and representing Tough Blasters this year. One of the finest fielders in the league, Smith Shah. This time on the middle stump and just worked beautifully on the onside towards the wideish mid wicket for a single. Score 4 runs. SK Strikers are owned by Ketan Bhai Shah. On the other end, Turf Blasters are owned by Suchit Jairaj Shah. Score is 4. Suchit to come round the wicket for the southpaw, nudging it in front of the square for a single. Maulik the fielder at wideish mid on, 5 without loss. It's a quiet start and a watchful start, I must say. SK Strikers are having 4 points. Over pitch delivery, and that goes straight to the ground. A brilliant stroke from the bat of Harshal Shah. We Jewels 4. Jewels by Varsha Exports 9. Score is 9. First aggressive stroke. It was an over pitch delivery and brilliant shot to start with. A nice comeback by Suchit, 9 without loss. This time driving it, not with much power, just the push. And there is a chance of run out, and for Smith Engineering Company wicket and a short run. Short run given by umpire. And Smith Engineering Company wicket number 1 gone. And the $1,000,000 question is, was there any need to hurry up? Harshal Shah had just hit and he was hungry to get onto the strike, and slightly slow in his reaction, and brilliant gloves work done by Manit Shah. First Smith Engineering Company wicket gone. New batter is Nishit Shah. Nine for 1. Harshal Shah got out of 7 runs with the help of 1 boundary, and early wicket here. So Jigar Salvi, who got an opportunity today to play and had a good throw at the stumps, and Manit did the rest. Electrifying gloves work. Vilesh Salvi or Wali to start next over. 2 overs, 9 runs and 1 wicket. Run rate 4.5. This time ball took off after pitching, and another single. Rishit Shah early in the innings is all about nudging and maneuvering the ball. He would want to build up on innings. 10 for 1. So Nishit Shah now wouldn't have even expected that he would be early into the batting. Both these teams have played 3 matches each. The only difference is Tough Blasters are at 8 points and SK at 4. That ball keeping low, appeal for LBW. Finally Nishit completes a single.
It has touched the bat and Nishit gets off the mark. Village Salvi into his second over, and this is the third over of the innings. We welcome all the viewers who are watching this beautiful telecast on Patan Premier League YouTube channel. A wide delivery, 12 for 1. This telecast is possible only because of our broadcasting sponsors, Philco Trade Center Private Limited. 12 for 1. So beautiful camera work by our camera team since day one. Color combinations are captured beautifully, graphics are good, logos of all the advertisers, logo of PPL, logo of Shri Patan Jain Mandal, everything running on the screen. 12 for 1. Village Salvi. He will be bowling to Rishit Ketan Shah. Oh, was that a thickish inside edge? Runs are certainly... No, it's a bye. It doesn't matter how they come as long as they keep coming. Score 13 for 1 now. Nishit Bhupendra Shah playing on 1. Rishit Ketan Shah playing on 3 of 7. Wali left arm over the wicket. Oh yes, there is a nick, and this is Trinity Entertainment catch of the match. And Smith Engineering Company wicket number 2. No footwork whatsoever. Village Salvi cutting that ball across and taken beautifully behind the stumps. So that's the Smith Engineering Company wicket number 2. Nishit Shah gets out early, and Newman in is skipper Kavish Zaveri. The action replay capturing Village Salvi's run up, goes past umpire and tries to cut the ball. No footwork and a thickish outside edge and a dolly catch given to Suchit Jairaj Shah. 3 overs, 13 for 2. First wicket in the account of a bowler, Village Salvi, which was wicket number 2. First wicket was a run out, of course, and Nishit got out for just 1 run. Another bowling change, and Suchit Jairaj Shah has invited Nirav Mahendra Shah to bowl. These are pleasant windy conditions. Sun still not out, hiding behind the clouds. This is the weather where you got to take care of your nose, throat. Try and drink lukewarm water. That's the right way of managing winters. Just 1 boundary so far in this innings. We are already done with 3 overs of power play. Perfect angle to start with. Rishit taking himself away from the strike position
and talking to himself, focusing hard again. Brilliant glove work today by Manit Shah behind the stumps. Nicely driven, and Manish the fielder at extra cover. 14 for 2. SK strikers need a good partnership, and this can be a very good partnership. Kavish Parag Zaveri and Rishit Ketan Shah. Slightly foggy conditions, but cricket goes on. You can actually make out from the backdrop cool breeze running by us. A typical English weather conditions. Kavish Zaveri going for, oh my God, what a try that was. Kavish Zaveri just survived a big accident. What a dive that was. If Jonty Rhodes would have seen that, he would have hugged Smith Shah. What an attempt. And what a broadcast by our camera team. He dived like a cheetah. 15 for 2. Kavish Zaveri must be thanking his luck. Suchit Jairaj Shah now in the first slip. Niro Mahindra Shah also has a distinction of bowling a maiden over couple of matches ago. Yesterday also we saw MTM Riders bowlers Rachit Kaushik Shah and Vismay Choksi. They bowled a maiden over each. Vismay in fact had a wicket maiden. This time turning it on the onside for a single. End of over number 4, 16 for 2, run rate 4 runs per over. Vilesh Salvi, who just got the wicket of Nishit Shah into his third over. Placed in gully, just using the pace of the ball, they take a single. Niro Mahindra Shah, the fielder, score 17 for 2. We welcome all of you on behalf of our organizing committee, Tushar Bhai Shah, Bhavesh Shah, Nishit Shah, Asit Shah, Vismay Choksi, Harshal Shah, Punit Shah, Kavish Zaveri, Sahil Shah and Viresh Shah. Nice offside cordon, looking at the stroke making ability of Kavish Zaveri. A slip, a third man, a wideish gully, short gully, a short extra cover and a mid off. On the off, on the onside, well, it's a wideish square leg where Asit Shah is there. There's a short mid wicket and a wideish mid on. Maulik at wideish mid on.
Smith Shah is one such fielder who keeps saving about 10 to 12 runs. And in T20 cricket, Jonty Rhodes once said that even if one player saves 1 run, it will be savings of 11 runs at the end of 20 overs. But when you have Smith, he is all in one and one for all fielder who alone saves about 10 to 12 runs every match. Or this time, Kavish Zaveri, full flourish of the bat and a brilliant, fantastic square drive for V Jewels 4. Jewels by Varsha Exports. Fantastic timing. Just opening the face of the bat, Kavish Zaveri. And that was certainly a captain's shot. Slightly bending and executing it to the perfection. Or this time again finding the gap. This will sprint to the fence for 4. V Jewels 4. Jewels by Varsha Exports. Vilesh Salvi definitely not happy the way fielding has happened. Kavish Zaveri, excellent hand-eye coordination. Just using the pace of the ball of Vilesh Salvi. That's the action replay. Covered is off stump and played very late to get those 4 valuable runs. 25 for 2. Oh, this is the ball. A snorter. Unplayable. 5 overs, 25 for 2. નીરવ મહેન્દ્ર શાહ આપ જોઈ રહ્યા છો સોવરીન શાહ પ્રસ્તુત પાટણ પ્રીમિયર લીગ સિઝન 5 આજે ટુર્નામેન્ટનો છઠ્ઠો દિવસ છે અને 11મી મેચ ટર્ફ બ્લાસ્ટર્સ અને એસકે સ્ટ્રાઇકર્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ વખતે ટપી પડતાની સાથે ફ્લિક કર્યું હતું, 1 રન પૂરો કર્યો અને બોલ જઈને બૂટ ઉપર લાગ્યો હતો. સારો થ્રો વિલેશ સાળવીનો. સ્કોર 26, 2 વિકેટે. અમારા જે પ્રેક્ષકો અત્યારે રવિવારે સવારે નાહી ધોઈ ચા નાસ્તો કરતાં કરતાં આ ટેલિકાસ્ટ જોઈ રહ્યા છે એમનું હાર્દિક સ્વાગત. રવિવારની સવાર એટલે થોડોક આરામથી ઉઠીને ઘરના બાકી રહેલા કામોને પતાવવાનો દિવસ હોય છે, પરંતુ રસોઈ કરતાં કરતાં બહેનો, દાઢી કરતાં કરતાં પુરુષો કે નાસ્તો કરતાં કરતાં मैच જોવી એક લાવો છે. 26 પર 2 પાવર પ્લેની છેલ્લી ઓવર છે. આ વખતે બેટના મધ્ય ભાગમાં લઈને ડ્રાઈવ કર્યું હતું, 1 રન જીગર સાળવી પાસે. 27 પર 2. 2 વિકેટો આજે જલ્દી પડી ગઈ હતી. પહેલી વિકેટ પડી ત્યારે સ્કોર હતો 9, બીજી વિકેટ પડી ત્યારે સ્કોર હતો 13. પહેલા આઉટ થયા હર્ષલ, જે રનઆઉટ કર્યા હતા જીગર સાળવીએ, અને ત્યારબાદ સુચિતના હાથમાં ઝીલાઈ ગયા હતા નિશિત શાહ. 27 રન 2 વિકેટે. પાવર પ્લેની છઠ્ઠી ઓવર. સ્ટમ્પની નજીક આવીને આ દડો મિડલ સ્ટમ્પ પર કર્યો હતો અને આશિષ શાહ પાસે રમ્યા હતા શોર્ટ મિડ વિકેટ પર. પહેલી 6 ઓવર પાવર પ્લે હોવાના કારણે ફિલ્ડિંગ રેસ્ટ્રિક્શન્સ રહેશે. જે સર્કલ બનાવવામાં આવે છે સફેદ રંગનું, એક વ્હાઇટ નેકલેસનું દ્રશ્ય ઊભું થાય જે આપણે ઉપરથી જોઈએ. 28 પર 2. આ દડો ચેનલમાં રાખ્યો હતો, નીચે રહ્યો હતો, સીમ પર ટપી પડીને માત્ર બેકલિફ્ટ સારી રાખી હતી નીચે અને 1 રન પૂરો કર્યો હતો. કવિશ ઝવેરી બોલરોના દડાની ગતિનો ઉપયોગ બહુ સારો કરી રહ્યા છે. સ્ટ્રોક રમતી વખતે શક્તિ કરતાં યુક્તિ શ્રેષ્ઠ છે એમ બતાવીને તેઓએ 2 સુંદર ચોગ્ગા માર્યા છે. 29, 2 વિકેટે.
આ વખતે મોકો હતો. રિશિત કેતન શાહ રમવામાં થાપ ખાઈ ગયા હતા. નીરવ મહેન્દ્ર શાહ ઓલરાઉન્ડર ખેલાડી છે આ ટીમના. ચૌદ નંબરની જર્સી પહેરેલ છે નીરવ મહેન્દ્ર શાહ. ટપી પડતાની સાથે આ વખતે ગલીમાં રમ્યા હતા. 1 રન પૂરો કર્યો હતો. આ રીતે ફિલ્ડિંગ ઉપર પ્રેશર બનાવતા રહેવું પડશે. પાવર પ્લેની 6 ઓવર પૂરી થયેલ છે. રન રેટ 5નો છે. 30 રન 2 વિકેટે. કવિશ 11 રન સાથે રમી રહેલ છે. રિશિત 9. નવી ઓવર કરી રહ્યા છે વિલેશ સાળવી. સતત 4 ઓવર કાલે આપણે જોયું અંબીશે કરી હતી. આજે સતત 4 ઓવર વિલેશ સાળવી કરી રહ્યા છે. વિલેશ સાળવીની નવી ઓવરનો પહેલો બોલ. રિશિતે 1 રન લીધો હતો. રિશિત રન ભેગા કરવામાં નિષ્ણાત ખેલાડી છે. આ પહેલાં એકવાર ટીમ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ પણ જીતી ચૂકેલ છે. માત્ર ટીમ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જીતવાથી મેન ઓફ ધ મેચ જીતવા તરફની જે પ્રગતિ છે એ રિશિતે કરવાની રહેશે. બીજી બાજુ કવિશ ઝવેરી આ ટુર્નામેન્ટમાં બેટિંગ સાથે થોડો ન્યાય નથી કરી શક્યા હજુ સુધી, પરંતુ આજે આ મહત્ત્વની મેચમાં સારી રમત બતાવે એ અપેક્ષિત છે. આ વખતે બિલકુલ આની જ વાત કરી હતી. બોલરના બોલની ગતિનો ઉપયોગ કરવો એ કોઈ કવિશથી શીખે. વી જ્વેલ્સ ચોખ્ખો, જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ. શક્તિ કરતાં યુક્તિ શ્રેષ્ઠ છે બતાવી રહ્યો છે કવિશ ઝવેરી. કવિશ ધ કારતુસ ઝવેરી. એમના ફટકા એ પિસ્તોલની અંદરથી નીકળી રહેલા કારતુસ મેગઝીનની જેમ જોવા મળી રહ્યા છે. 35 રન 2 વિકેટે. ફરી એકવાર એ જ દિશામાં રમવાનો પ્રયત્ન અને આ સાથે વિઝ્યુઅલ્સ ચોખ્ખો. જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ અને વાઇડ દડો છે એટલે 1 રન હજુ એક્સ્ટ્રા મળશે. ટોટલ 5 રનનું બોનસ. 40 2 વિકેટે. 13 ઉપર 2 વિકેટ પડી ગઈ હતી. ત્યારબાદ 27 રનની ભાગીદારી. કવિશ ઝવેરી 17 નંબર જર્સી પહેરી રહ્યા છે. આપણે જોયું ક્રિશ વોરા એસપીએસ સુપરસ્ટાર્સના પણ 17 નંબરનું જર્સી પહેરે છે અને ક્રિશ વોરાએ 2 અડધી સદી ઠોકેલ છે આ સ્પર્ધામાં. ધીમેથી પુશ કરીને મનીષ પાસે રન લીધો હતો કવિશે. $41 for 2, 41 રન 2 વિકેટ. વાઇડના 6 રન આવેલ છે. વિલેશ સાળવી છેલ્લી ઓવર કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી 26 રન આપીને 1 વિકેટ. આ વખતે ઝડપી ખૂબ મોટો પ્રયત્ન. કવિશ ઝવેરી બીજી વાર આજે ભાગ્યશાળી રહેલ છે. પહેલા સ્મિથના હાથમાંથી એક બહુ અઘરો ચાન્સ છૂટ્યો હતો અને આ વખતે તો રનઆઉટની સુવર્ણ સંધિ ચાલીને આવી હતી. રિશિત અને કવિશ વચ્ચે સંવાદ નહોતો. 41 પર 2. 4 ચોગ્ગા અત્યાર સુધી આ ઇનિંગમાં લાગેલ છે. રિશિતે આ વખતે બોલને પુલ કર્યો હતો અને 1 રન મૌલિક પાસે પૂરો કરેલ છે વાઇડિશ મિડ વિકેટ પર. 42 for 2, 7th ઓવર. રન રેટ ભલે વધારે ન દેખાઈ રહ્યો હોય પરંતુ એક સારી ભાગીદારી
આ બંને બેટર વચ્ચે જોવા મળી રહી છે ત્રીજી વિકેટ માટે. એક સમય હતો જ્યારે 13 પર 2 વિકેટ હતી, અત્યારે 42 પર 2. આ વખતે એક અવનવો પ્રયોગ કરવા ગયા હતા કવિશ ઝવેરી. 1 રન જરૂર પૂરો કર્યો છે અને આ 1 રન એમના ખાતામાં લખાશે. 7 ઓવર 43 રન 2 વિકેટ. કવિશ 17, રિશિત 11, વિલેશ સાળવી 4 ઓવર 28 રન 1 વિકેટ. આપ જોઈ રહ્યા છો સૌરીન શાહ પ્રેઝન્ટ્સ પાટણ પ્રીમિયર લીગ સીઝન 5. સુચિત જયરાજ શાહ ફિલ્ડિંગમાં થોડા ચેન્જીસ લાવી રહ્યા છે. કવિશ માટે આશિષ શાહ જેઓ ડીપ કવરમાં હતા એમને લગભગ 5 મીટર આગળ બોલાવેલ છે. સ્લીપમાં કોઈ નથી. માનિત હજુ મદદ કરી રહ્યા છે સુચિતને ફિલ્ડિંગ પ્લેસમેન્ટ માટે. એક વાઇડિશ ગલી, એક પોઈન્ટ, એક કવર આગળ રાખવામાં આવેલ છે, વાઇડિશ એક્સ્ટ્રા કવર અને એક લોંગ ઓફ. આ રીતે અત્યારે 5 ખેલાડી ઓફ સાઈડ પર, 4 ખેલાડી ઓન સાઈડ પર છે. ઓન સાઈડ પર વાઇડિશ સ્ક્વેર લેગ, ડીપ બેકેટ સ્ક્વેર, વાઇડિશ મિડ ઓન અને લોંગ ઓન. આ વખતે દડો નીચો રહ્યો હતો સુચિતનો. રન રેટ ઉપર અંકુશ રાખવાનો પ્રયત્ન અત્યારે કરી રહ્યા છે સુચિત. સારો દડો હતો. 2 કેપ્ટન વચ્ચેનું આ દ્વંદ્વ જોવા મળ્યું હતું, જ્યાં 1 રન મનીષ પાસે શોર્ટ મિડ વિકેટ પર લીધો હતો. હજુ પણ જમણેરી અને ડાબેરી બેટર હોવાને કારણે બોલિંગ કરતી વખતે સંભાળીને બોલિંગ કરવી પડી રહી છે ટર્ફ બ્લાસ્ટર્સને. ટોસ જીતીને પહેલાં બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને સારો નિર્ણય, આવકારવામાં આવે એવો નિર્ણય હતો, કારણ કે 13 રનમાં 2 વિકેટો પડી ગઈ હતી હર્ષલ શાહ અને નિશિત શાહ. પરંતુ ત્યારબાદ રિશિત અને કવિશ વચ્ચે સારી ભાગીદારી. સુચિતા પહેલા 1 ઓવર કરી હતી, અત્યારે પોતાની બીજી અને ઇનિંગ્સની 8મી ઓવર કરી રહ્યા છે. 20-20 ઓવરની આ રમત. આ વખતે ટપી પાડી હતી મિડલ સ્ટમ્પ પર અને ત્યાંથી બોલ ફાઇન લેગ તરફ ગયો હતો. અને 1 રન હજુ લઈ લીધો હતો. લેગ બાય. એક્સ્ટ્રા રન અત્યારે બહુ વધારે આવી રહ્યા છે અને ટર્ફ બ્લાસ્ટર્સ માટે અત્યારે ઘાટ કરતા ઘડામણ મોંઘી પડે એવી સ્થિતિ દેખાઈ રહી છે. 47, 2 વિકેટે 8મી ઓવર. 34 રનની ભાગીદારી આ બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે થયેલ છે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે હજુ જો એક 4-5 ઓવર આ બંને બેટર ઊભા રહી જાય તો સ્કોર મોટો જોવા મળશે. આ વખતે યોર્કર બોલ હતો અને રન લીધો હતો ઓન સાઈડ પર. મનીષે આજે સારી ફિલ્ડિંગ કરી છે સર્કલની અંદર. 48 રન 2 વિકેટે 8મી ઓવર રમાઈ રહી છે. કવિશ પરાગ ઝવેરી 13 બોલ 18, રિશિત કેતન શાહ 22 બોલ 11. રિશિત કેતન શાહ નાના ભાઈની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે અત્યારે. ઓવર પૂરી થયેલ છે. 8 ઓવર 48 રન 2 વિકેટ. આપ જોઈ રહ્યા છો સૌરીન શાહ પ્રેઝન્ટ્સ પાટણ પ્રીમિયર લીગ સીઝન 5.
48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और एक बॉलिंग परिवर्तन यहाँ पर विनय शाह को आजमाया जा रहा है। पिछले मैच में टर्फ ब्लास्टर्स के लिए मैन ऑफ द मैच रहे थे विनय शाह। पाटन प्रीमियर लीग सीजन 4 में एसके स्ट्राइकर्स में दिखे थे, लेकिन सीजन 5 में टर्फ ब्लास्टर्स ने उनको ऑक्शन में लिया है। 48 for 2। कविश जवेरी के सामने अब विनय शाह। बहुत ही सीनियर क्रिकेटर है विनय। टप्पा खाते इस बार हुक कर दिया था एक अजीबो गरीब ढंग से। विकेट कीपर मानित को दौड़कर जाना पड़ा था पीछे। 2 रन पूरा किया। तीसरा लेना चाह रहे थे, वहां पर यह महंगा पड़ सकता था। बहुत अच्छा थ्रो आसित शाह का। देखिए मानित दौड़ कर आ रहे थे, आसित चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन रुक जाए वो आसित नहीं। आसित ने सोचा मानित के ऊपर मैं कितना निर्भर रहूंगा, स्वयं आए और तीसरा रन नहीं होने दिया। यह आसित शाह है, खुददारी भरा क्रिकेटर आसित शाह। 50 रन पूरे हुए यहां पर। 49 गेंदों में 50 रन बने। 49 बॉल्स 50 रन्स। टप्पा खाने के बाद इस बार बहुत ज्यादा टर्न हुई दायरे के बाहर और वाइड बॉल। 2 विकेट पर 51 रन। इस बार स्वीप कर दिया है। खाली जगह से गुजरती हुई गेंद। विलेश साड़वी आके अब गेंद को उठाया, लेकिन जब तक 2 रन ले चुके थे कविश जवेरी। तमाम टीमों के कैप्टन अच्छा खेल रहे हैं और कविश भी अब उस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए। (53 for 2). फ्लाइट दिया था और चलकर रन को पूरा करते हुए कविश जवेरी। कविश जवेरी जब 22 यार्ड के पिच पर चलते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो अर्जुन रामपाल रैंप वॉक पर चल रहा हो, बड़े शान के साथ, आत्मविश्वास के साथ। 54 for 2 9th ओवर। विनय के ओवर में अब तक 6 रन बने हैं। इकतालीस रनों की भागीदारी इन 2 खिलाड़ियों के बीच में। ऋषित ने इस बार स्वीप किया है स्क्वायर ऑफ द विकेट। जिगर साड़वी के पास जाती हुई गेंद। 55 for 2। 55 रन 2 विकेट पर। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, स्टंप आउट की अपील और यहां पर वाइड बॉल दिया है। एक्शन पैक क्रिकेट और तीसरे अंपायर की मदद। थर्ड अंपायर रेफर किया गया है, वाइड बॉल दी गई है।
બહુ જબરદસ્ત ટેલિકાસ્ટ અમારી ટીમ બતાવી રહી છે. થર્ડ અમ્પાયરના ગ્રાફિક્સ ફિલ્કો ટ્રેડ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડના અમે આભારી છે, જે અમારા બ્રોડકાસ્ટિંગ પાર્ટનર છે. एक रुका हुआ फैसला थर्ड अंपायर का. आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5. विशेष आभार श्री पाटन जैन मंडल सेवा सहकार संगठन ज्ञान दर्शन चरित्र. सो स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 3 का पतन. कवि जवेरी इसके पहले भी एक बार रन आउट होते हुए बचे थे, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दी और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 3 का पतन गिरता हुआ. यहां पर नए बैटर आ रहे हैं मिहिर शाह. कवि जवेरी को जल्दबाजी महंगी पड़ी और ये बड़ा विकेट. कवि जवेरी जबकि अच्छा खेल रहे थे, 18 गेंदों में 24 रन बनाए और उनको स्टंप आउट किया गया मानिक शाह द्वारा. 3 चौके लगाए उन्होंने. 133.33 का स्ट्राइक रेट, लेकिन एक बेशकीमती विकेट टफ ब्लास्टर्स को मिला है. मानिक शाह की विकेट कीपिंग की दाद दी जाए उतनी कम है. विकेट कीपर 10 में से 9 मरतबा चित्र में तभी आता है जब गलती करता है, लेकिन कहा जाता है ना कि एक थैंकलेस जॉब. और मानिक शाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में हमने बेहतरीन विकेट कीपिंग देखी है. चाहे कुसुम वॉरियर्स के करण राज जवेरी हो, एमटीएम राइडर्स के तनय शाह हो, मानिक शाह टर्फ ब्लास्टर्स के लिए एसके स्ट्राइकर्स के लिए भाविक शाह, एसपीएस सुपरस्टार्स के लिए जिगर शाह और विरल शाह. इस बार ड्राइव कर दिया है और दूसरा रन पूरा करते हुए वहां पर मिहिर. दोनों बैटर अब लेफ्टी है मैदान में. इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज रहा मधुर साळवी. मुझे याद है जब मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिनेश ने शेयर किया मधुर साळवी के साथ कि पंकित उनके रेगुलर विकेट कीपर को चोट लगी थी और मधुर ने चैलेंज स्वीकार किया. मधुर की भी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी रही है. आई थिंक वी हैव गॉट फैंटास्टिक 6 विकेट कीपर्स इन द फ्रे दिस ईयर. 58 for 3 at the end of 9 overs. विनय शाह 1 ओवर 10 रन 1 विकेट. मिहिर सुरेश कुमार शाह 1 बॉल 2, ऋषित केतन शाह 24 बॉल 12, करंट रन रेट 6.44.
की शुरुआत यहाँ पर सुचित जयराज शाह और बहुत ही बेहतरीन स्वीप स्ट्रोक और ये लगा वी ज्वेल्स चौका. ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपर्ट्स. थोड़ा सा नाराज है अपने आप से सुचित. ये चौका नहीं दिया जाना चाहिए था. अभी अभी विकेट गिरा है, उसका दबाव जो था वो कम कर दिया है ऋषित केतन शाह ने. सुचित राउंड द विकेट आए थे और काफी समय दिया था बॉल को स्वीप करने के लिए. वी ज्वेल्स 4, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स 62 for 3. एक और जहां 62 बने हैं वहीं 3 विकेट भी गिरी है. सुचित की गेंद इस बार ड्राइव किया. सबसे अच्छी बात ऋषित की गेंद की लाइन में आकर खेलते हैं. 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर. हम आभारी हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के. ट्रॉफीज के स्पॉन्सर है हेल्दी क्रंच बाय मोनिका शाह, विकेट स्पॉन्सर्ड बाय स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी, मैक्सिमम सक्सेस ऑफ द मैच पटनी ऑप्टिशियंस, टीम प्लेयर अवार्ड सेल्फी डिजाइन, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय एमटी मादन एंड कंपनी, मेडिकल स्पॉन्सर्स हीलिंग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, योर हेल्थ इज अवर वर्ल्ड. जर्सीज और किट के स्पॉन्सर है जीपी हेयर पिन्स, गुडीज के स्पॉन्सर है वॉर्मियो, लव फ्रेशली सर्व्ड. नच कर दिया 1 रन मिहिर ने. हाइड्रेटिंग स्पॉन्सर्स वाइट डिवाइन, ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड. ये जो लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हो रहा है. एक और नीचे रहती हुई गेंद और ज़्यादा टर्न नहीं है इस पिच में. गेंदें आसान हो रही है खेलना. स्टंप पर बल्ले पर भी आ रही है. जो लेदर बॉल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके स्पॉन्सर्स है अलाइड डिजिटल आईटी मैनेज्ड रिस्पॉन्सिबली. इस बार करारा प्रहार और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाता हुआ शानदार चौका. बिल्कुल आफली पर लेकर ठोक दिया. वी ज्वेल्स चौका. ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स. मिहिर आया, खुशियां लाया. इस प्रकार के स्ट्रोक जो हैं ये जाजिबुल नज़र कहे जाते हैं. आंखों में जज्ब होने वाले, आंखों में हमेशा के लिए आप इसको पलकों को बंद करके स्टोर कर ले, ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं. 10 ओवर 69 रन 3 विकेट. 10 ओवर 69 for 3, रन रेट 6.90. हमारे ऐप और मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है एसके, वी सर्व सिंस 1932. कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट. New over shall commence from the far end as Vinay gets ready to bowl over number 11, 69 for 3. Tossing it up and this time going for a beautiful sweep shot. Finds a fielder there who intercepts it. Jigar Salvi has also saved about 4 to 5 runs today. 70 for 3. Jigar getting an opportunity in playing 11 today and already has a beautiful run out of Harshal in his name. This time trying to pull that ball and exquisite timing, and this is V Jewels 4. Jewels by Varsha Exports 4. A long hop almost towards the batter and at a knee height, easily picked by Mihir Shah. Mihir on 7. This time ball turned a bit, but single on the offside. Smith Shah the fielder. 75 for 3. Win around the wicket. Tempting the batsman to offer the shot, and Rishit obliges with that off drive towards Maulik, and that's a single. 76 for 3. Oh, what a shot that was. A hot shot.
Mihir Shah is unstoppable, and that's a V Jewels 4. Jewels by Varsha Export. Spectacular timing. There was a chance of catch out. Suchit jumped in the air, but his efforts in vain as the ball travelled at a lightning pace. And Mihir Suresh Kumar Shah is unstoppable today. 80 for 3. At one stage, they were 13 for 2. And then there was a brilliant partnership of 43 runs when Kavish departed. But Mihir has taken over. Better delivery this time. No runs. 80 for 3 at the end of 11. 22 runs have come off last 2 overs. Shah, the veteran cricketer, also committee member. First delivery, lower full toss and drives beautifully on the onside. Harsh Sanghvi, the fielder. 81 for 3, 12th over. Well, the way these two are batting, I think we can expect a score of 150 if both of these give a good stand to each other of about 30-40 odd runs. This time that ball deviating away from the left-hander towards the leg stump and given wide by umpire Prathamesh Angne. 82 for 3. Tough Blasters won the toss and invited SK Strikers to bat first. That was a nip backer. Asit has shown good control, and two of the best friends of Asit, Bhavesh Shah and Punit Shah, are also watching this match from the fence. A great bonding between these three friends for Top Blasters. Asit, Punit and Bhavesh. Lower full toss this time, showing his class, and that was a classical on drive. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Mihir the Marvelous. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports, 86 for 3. Although first 10 overs belong to Tough Blasters where they took 3 good wickets, but since last 3 overs or so, it's only Mihir Shah. Over pitch delivery, lofting it, and that's a humongous 6. V Jewels 6, Jewels by Varsha Exports 6, 92 for 3. Smothered away towards a longer fence for 6. Last 2 deliveries of Asit has conceded 10 runs. This time a slightly slower one. A leg by.
Good consolidation, and this partnership also now blossoming. Last wicket fell at 56. Right now they are at 93. Lower full toss. Well, I like the temperament of Rishit Ketan Shah, playing a cool innings, cool as a cucumber. 12 overs, 94 for 3. Asit Shah 1 over 13 runs. Mihir on 26 of 12. Rishit on 22 of 31. Rishit Ketan Shah whacking it out of the park for a massive 6. We Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. All of a sudden, these two have now gone berserk and score is 100 for 3. Partnership of 44 between the two. Rishit Ketan Shah going for another mighty swing of the bat. And that was a splendid 6. Bending on the knees, and We Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. And the partnership is 50 runs. This is what you would want to do. Both these batters have massacred the opposition bowling. Wide ball. So somewhere Tough Blasters have lost the plot in bowling department in last 5 overs or so, ever since Mihir has arrived. Rishit taking a single. What I like about Rishit Ketan Shah is he's just like Krish Vora. After hitting a 6 or a 4, would take a single and rotate the strike. The joy is in building the innings. You build the innings brick by brick, run by run. 108 for 3, 13th over. This time cutting it beautifully. Vilas Salvi has a long chase, will not be able to stop it. We Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Vinay proving very costly in his 3rd over. (13 overs, 112 for 3. Mihir on 30, Rashid on 35. 10 boundaries and 3 sixes so far in 13 overs. Once again, welcome to all the viewers who are watching this live telecast on Patan Premier League YouTube channel. It's that easy.
14મી ઓવર લઈને આવી રહ્યા છે નીરવ મહેન્દ્ર શાહ. આ વખતે ખૂબ જ નજાકતથી રમ્યા હતા અને બોલને ફાઇન લેગ બાઉન્ડ્રીની બહાર મોકલી દીધો છે. સ્વર્ણિમ સ્પર્શ અને વી જ્વેલ્સ ચોખ્ખો. જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ. રિશિત કેતન શાહ હવે ખૂબ સારી રમત બતાવી રહ્યા છે. મખમલી ફટકો માર્યો હતો. હાથમાં સુંદરમની નોટબુક હોય અને લખવા માટે રેનોલ્ડ્સની પેન હોય તો લખવાની જે મજા આવે એવી મખમલી સ્પર્શવાળી અત્યારે બેટિંગ ચાલી રહી છે. રિશિત કેતન શાહ 35 બોલમાં 35. એક સમય હતો 30 બોલમાં 21 ઉપર હતા રિશિત કેતન શાહ, પરંતુ ખૂબ જ સુંદર ભવ્ય રમત બતાવી છે એમણે. અને મિહિર સુરેશ કુમાર શાહ આજે સવાર એમની રહી છે. આજે સવારની સૌથી શ્રેષ્ઠ બેટિંગ મિહિર શાહની રહી છે. આ વખતે ઝડપી દડો અને વાઇડ આપેલ છે. વાઇડ બોલ અને રન 52 બંને બગડે એમ કહી શકીએ. 118 પર 3. 14મી ઓવર. 150 ઉપર સ્કોર જશે એવું લાગે અને આ બંને જણા અત્યારે ફાંકડી રમત બતાવી રહ્યા છે. ઓવરપીચ દડો ડ્રાઈવ કરેલ છે અને ખરાબ ફિલ્ડિંગ. એકબીજાના ભરોસે રહ્યા અને બોલ વી જ્વેલ્સ ચોખ્ખો. જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ. 122 પર 3. અચાનક બોડી લેંગ્વેજ જો જોઈએ આપણે ટર્ફ બ્લાસ્ટર્સની થોડી પ્રેશરમાં દેખાઈ રહી છે. અને આ મેચમાં બેટિંગ બોલિંગ કરતા ચઢિયાતી જોવા મળેલ છે. 123 3 વિકેટે. 14મી ઓવર રમાઈ રહી છે. 123માં 12 વાઇડના રન આવેલ છે. મિહિર 34 ઉપર. વાઇડ બોલ. 124 પર 3. કેપ્ટન કવિશ ઝવેરી, ટીમના કોચ અને એસકે સ્ટ્રાઇકર્સના બોલરો એઓ પણ ખુશ દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે તેમને ખબર છે કે આપણે એક સારો સ્કોર બચાવવા માટે જઈ રહ્યા છીએ બીજી ઇનિંગ્સમાં. છપ્પન ઉપર ત્રીજી વિકેટ પડી હતી જ્યારે કવિશ ઝવેરી આઉટ થયા હતા. ત્યારબાદ મિહિર આવ્યો. રિશિત કેતન શાહ 39 પર રમે છે. 124 પર 3. 14મી ઓવર. કાંડાની કરામત આજે જોવા મળી છે મિહિર અને રિશિત કેતન શાહ તરફથી. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ટીમ માટે અમે કંઈક કરી શક્યા એનો આનંદ. 14 ઓવર પૂરી થયેલ છે. 14 ઓવર બાદ 124 3 વિકેટે. નીરવ મહેન્દ્ર શાહ 3 ઓવર 20 રન, કોઈ વિકેટ નહીં. આપ જોઈ રહ્યા છો સૌરીન શાહ પ્રેઝેન્ટ્સ પાટણ પ્રીમિયર લીગ સિઝન 5. એસકે સ્ટ્રાઇકર્સ વતી અત્યારે દર્શિલ શાહ અને ગૌરવભાઈ શાહ ઉપસ્થિત છે ટીમના માલિકો વતી, જ્યારે ટર્ફ બ્લાસ્ટર્સના માલિક પોતે સુચિત જયરાજ શાહ આ મેચમાં રમી રહ્યા છે. નવી ઓવર લઈને આવી રહ્યા છે સુચિત જયરાજ શાહ. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા અમને અત્યંત હર્ષભેર આનંદ થઈ રહ્યો છે. અમારી કમિટી તરફથી ખૂબ મહેનત છેલ્લા 6 મહિનાથી આ ટુર્નામેન્ટમાં કાઢવામાં આવી છે. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ સફળ ટુર્નામેન્ટ તમારી સામે મૂકી છે. તુષારભાઈ શાહ, ભાવેશ શાહ, નિશિત શાહ, આશિષ શાહ, વિસ્મય ચોકસી, હર્ષલ શાહ, પુનિત શાહ, કવિશ ઝવેરી, સાહિલ શાહ અને વિરેશ શાહ
ઘણી બધી મીટિંગો, ઘણા બધા નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટ, અગર કોઈ એવી ઇમરજન્સી સ્થિતિ પેદા થાય તો ત્યારે શું નિર્ણય લેવો, આ કમિટી જે છે એને બહુ ડાયનેમિક ડિસિઝન્સ લીધા છે, જે માટે તેઓ અભિનંદનને પાત્ર છે. આ વખતે ગલીમાં 1 રન લીધો હતો આસિત પાસે. ₹125 પર 3. અહીંયાથી જો બીજા 50 રન બની જાય તો 175નો સ્કોર દેખાશે. કાલે પણ આ પીચ ઉપર જે બંને મેચો હતી એ હાઈ સ્કોરિંગ મેચીસ રહી હતી. કુસુમ વોરિયર્સે 199 રન બનાવ્યા હતા ફિઝિયોની સ્મેશર્સ સામે. દેવેન્દ્રુઆએ કાલે આ વર્ષની પહેલી સેન્ચુરી મારી હતી અને આ પાટણ પ્રીમિયર લીગ સિઝન 5ની બીજી સદી હતી. પહેલી સદી આ જ મેદાન ઉપર સમીર પી શાહ ફિઝિયોની સ્મેશર્સે મારી હતી. ₹127 પર 3. અને હવે ધીરે ધીરે સૂર્યનારાયણ વાદળોમાંથી દર્શન આપી રહ્યા છે. આ વખતે જબરદસ્ત પ્રદર્શન. સ્મિત શાહે ચોક્કો રોક્યો હતો. ઇલાસ્ટિક મેન, મતલબ એના શરીરમાં રબર છે કે શું એવી ફિલ્ડિંગ એણે કરેલ છે. સ્મિત શાહ 24 નંબર જર્સી. 128 પર 3, 15મી ઓવર. સુચિત જયરાજ શાહ આ વખતે ફોરવર્ડ શોર્ટ લેગ તરફ 1 રન લીધો હતો. વિકેટકીપર માનીતે બોલ રોકીને આપ્યો હતો. ચોથી ઓવર કરી રહ્યા છે સુચિત જયરાજ શાહ. 24 રન અત્યાર સુધી, કોઈ વિકેટ નથી મળી. 129, 3 વિકેટે, 15મી ઓવર. ટપી પડતાની સાથે બોલનો સ્પિન ખતમ કરીને સ્વીપ કર્યું હતું મનીષ પાસે, જેઓ મિડ વિકેટથી સ્ક્વેર લેગ સુધી દોડી આવ્યા હતા અને 1 રન. 15 ओवर की समाप्ति 130 पर 3. आप देख रहे हैं सौरिंचा प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5. सुचित शाह 4 ओवर 25 रन. ऋषित केतन शाह 41 बॉल 41. मिहिर सुरेश कुमार शाह 19 बॉल 38. आसित नए ओवर करेंगे. नए ओवर की पहली गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ मुड़ी थी. कलाइयों से उसे कलात्मक अंदाज में खेला था विनय शाह के पास वाइडिश फाइन लेग पर. 131 पर 3. एसके स्ट्राइकर्स यहां से कम 50 रन चाहेगी, क्योंकि दोनों बैटर्स इस वक्त आंखें जमा कर खेल रहे हैं. आसित शाह गेंद करेंगे अब मिहिर शाह को. दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए. हर ओवर में इस तरह के 3 से 4 बिंदी गेंदों की जरूरत रहेगी. बिंदी गेंद यानी कि डॉट बॉल, बगैर कोई रन वाली गेंद को हमारे हिंदी कमेंटेटर्स भाइयों ने नाम दिया है बिंदी गेंद. स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी इस ओवर में. आसित के पहले ओवर में फुल टॉस गेंदें हमें देखी थी, लेकिन आसित अब लय में आ चुके हैं. केवल 14 रन दिए हैं अब तक अपनी 9 गेंदों में आसित शाह ने, और इस ओवर में महज 1 रन. 131 पर 3.
जब इस तरह की गेंदें होती है तो पूरी टीम, देखिए अब अचानक ही टीम के अंदर एक शक्ति का संचार हो गया। हासिद आप एक अच्छा ओवर कीजिए तो मज़ा आ जाएगा, बस वही बात कह रहे होंगे। लगातार 3 डॉट बॉल। इस बार बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, 1 रन। एक 132 पर 3, 132 फॉर 3। कल का ही पिच आज इस्तेमाल कर रहे हैं और गेंदें बराबर बल्ले पर आ रही है, यानी कि यह मैच भी हाई स्कोरिंग हो सकता है। इस बार टप्पा खाते ही उठा दिया और विलेस साळवी के हाथ में ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच, और ये स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 4। लगातार डॉट बॉल का प्रेशर बना हुआ था और स्ट्रोक खेलते समय अपना विकेट कुर्बान कर दिया। विलेस साळवी ने कैच लिया और ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच। बैठक शॉट था, ना ऊंचाई नाप पाए ना अंतर, और ये विलेस साळवी के हाथों में गेंद इस तरह बैठी जैसे चिड़िया घोंसले में बैठ जाती है। और 44 गेंदों में 43 रनों की बेशकीमती पारी, यहां पर 2 चौके 2 छक्के लगाए और वापस लौटे ऋषित केतन शाह। सबसे बड़ी बात है, ऋषित ओपनिंग बैट्समैन के रूप में गए थे। 16 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की, एक छोर को संभाल कर रखा और पूरी टीम मैनेजमेंट तालियों से उनका स्वागत करती हुई। नए बैटर है भाविक शाह। एक छोटी सी टीम मीटिंग, जिसको अंग्रेजी में हडल कहा जाता है, वो इस वक्त, जब एक बैटर आउट होता है और दूसरा बैटर आता है, तब तक हो सकता है जलपान भी किया जाए, और ये वो समय होता है जब फील्डिंग टीम को भी एक मौका मिलता है आगे की रणनीति बनाने का। नया बैट्समैन है ध्वनिल शाह। नीरव महेंद्र शाह को अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी सौंपी गई है। आखिरी 24 गेंद में अगर 150 के अंदर स्कोर को सीमित रखने में कामयाब होते हैं तो वो भी अपने आप में टर्फ ब्लास्टर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। स्पोर्ट्स नेक्स्ट के तमाम वॉलंटियर्स, मनीष तारकर और उनकी टीम, कविता जायसवाल, ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को कामयाबी का जामा पहनाने के लिए। नए ओवर की पहली गेंद ड्राइव कर दिया है, 1 रन। मीर शाह को दूसरा लेने का प्रयास, आउट होने का खतरा, और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 5। ध्वनिल शाह प्लेटिनम डक पर आउट हुए, बिना कोई गेंद खेले जब बैटर आउट होता है, अमूमन जब आप बिना कोई गेंद खेले रन आउट होते हैं तो उसको प्लेटिनम डक कहा गया है। और ये बड़ा विकेट यहां पर स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी, विकेट नंबर 5, और नए बैटर है समीर शाह उर्फ सैम। समीर शाह, सैम। देखिए अब ये क्रिकेट की विचित्रता है। एक अच्छा ओवर आसिफ ने क्या किया, अचानक ही साग के लकड़े की तरह मजबूत दिखने वाला जो मिडिल ऑर्डर था, अब पारी में सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं।
टर्फ ब्लास्टर्स को एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है मैच में वापस आने का। एक भव्य पार्ट ऋषित केतन शाह और मिहिर सुरेश कुमार शाह के बीच में देखने मिली, लेकिन उसके बाद 2 बैक टू बैक विकेट्स। वाइड बॉल, टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा बाहर निकली थी गेंद। नीरव महेंद्र शाह एसके क्लब एंड रिसोर्ट्स एंड से बॉलिंग करते हुए। इस बार बेहतर बॉल थी, बिल्कुल बल्ले को वार्निंग देती हुई कि संभल कर रही है वरना मैं आपको टच कर सीधा मानित के दस्तानों में कैद हो जाऊंगी। 134 पर 5। समीर ने 1 रन लिया सुचित के पास ऑन साइड पर। बल्कि टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि मिहिर शाह ज़्यादा गेंदें खेले, क्योंकि 24 गेंदों में 40 पर खेल रहे हैं। पिछली बार उन्होंने टीम प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता था। पिछले साल भी 4 टीम प्लेयर ऑफ द मैच और 2 मैन ऑफ द मैच जीते थे मिहिर। पहला मैच खेल नहीं पाए थे एसके स्ट्राइकर्स के लिए, लेकिन अब वो रेगुलरली अवेलेबल है। हर फन मौला खिलाड़ी है, हर फन का मौला है, यानी कि ऑलराउंडर है। 136 पर 5। इस बार टैप करते हुए खेला है और गेंद जा रही है गली बाउंड्री के बाहर। वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। अफलातुन टाइमिंग था वहां पर, जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया। शॉर्टर वाइड बॉल थी, थोड़ा सा शफल हुए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और पंच लगा दिया। 140 पर 5। वी ज्वेल्स 4, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स 4 देखी हमने। वाइड बॉल 141 पर 5। इस बार गेंद की लाइन में आकर बेहतरीन प्रहार था गेंद के ऊपर। ये अलग बात है कि केवल 1 रन मिलेगा। हर्ष संघवी वहां पर क्षेत्र रक्षक थे। नीरव महेंद्र शाह 4 ओवर 30 रन, कोई विकेट नहीं। 17 ओवर 142 पर 5। आखिरी 3 ओवर का खेल शेष है और कम से कम 160 तक जाना ये जरूर दोनों बैटर्स प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि 160 अगर बनते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट 8 रन प्रति ओवर का हो जाएगा, एंड विच शुड बी अ गुड टारगेट। टर्फ ब्लास्टर्स पहले 10 ओवर तक बहुत अच्छा क्रिकेट रहा, लेकिन ओवर नंबर 11 से लेकर ओवर नंबर 15 तक पूरे 5 ओवर्स डोमिनेट किया ऋषित केतन शाह और मिहिर सुरेश कुमार शाह ने। आसिफ के नए ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर गए, क्रीज में डीप जाकर पंच लगा दिया। यह भव्य और सजीला शॉट। वी ज्वेल्स 4, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। समीर शाह ने बता दिया कि मैं आ चुका हूं। 146 पर 5। इस बार सफल होकर खेल दिया स्क्वायर लेग पर 1 रन। जिगर साड़वी फील्डर थे। 147 पर 5।
लोअर फुल टॉस, ड्राइव किया मिहिर ने, ओवरथ्रो का भी रन आता हुआ। जिगर साळवी का थ्रो बेहतर था लेकिन स्टंप्स गिरे नहीं है। विनय शाह ने बैकअप किया था वाइडिश स्क्वायर लेग पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 149 फॉर 5। ओवर नंबर 18, 14 चौके और 3 सिक्स लगे इस पारी में। मतलब 18वां ओवर है। सतीश, हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक जरूर लगा है ऑन एन एवरेज। इस बार बॉल नीचे रही, वहां पर लॉन्ग स्टॉप पोजीशन पर जा रही है और नीरव महेंद्र शाह वहां पर दौड़े 1 रन। 150 रन पूरे होते हुए यहां पर एसके स्ट्राइकर्स के। एक 150 पर 5। इस बार स्लॉक स्वीप। ये अलग बात है कि हरे रंग की चटाई के ऊपर उसको स्वीप किया गया था। 151 पर 5। एसके स्ट्राइकर्स के खेमे में खुशी नजर आ रही है। ऋषित कीर्तन शाह अर्धशतक पूरा कर सकते थे। हर्षल जल्दी आउट हुए, कविश जल्दी आउट हुए। अठारह ओवर समाप्त हुए हैं। 152 5 विकेट के नुकसान पर। रन रेट 8.44। आसिफ शाह ने अपने आखिरी 12 गेंदों का खेल शेष। आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। विनय अपना आखिरी ओवर करेंगे। 3 ओवर 39 रन 1 विकेट। इस बार खेला है डीप फाइन लेग की तरफ, जहां नीरव शाह गेंद को थ्रो करते हुए 153 पर 5। मीर 45 पर खेल रहे हैं। 29 गेंदों का सामना किया है, 6 चौके लगाए, 1 सिक्स लगाया है। इस बार टप्पा खाया और समीर ने स्लॉक स्वीप किया था। हालांकि यह स्वीप मिड विकेट की तरफ न जाते हुए हर्ष संघवी की जानिब गया था वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, और बैट को बदला है वहां पर मिहिर शाह ने। अपने अर्धशतक के बहुत करीब आ चुके हैं मिहिर। 154 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार बल्ले को स्वाइप किया, 1 रन। स्मित शाह काफी समय बाद अब देख रहे हैं इस मैच में गली से हटकर अब पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ये पोजीशंस भी नजर आ रहे हैं अंतिम ओवरों में। 155 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार ओवर पिच बॉल थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चले गए
और ये बेमिसाल 6, वी ज्वेल्स 6, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। चार रन दिया है, अंपायर ने अपने निर्णय को बदला है। वी ज्वेल्स चौका, बहुत बढ़िया लॉफ्टेड कवर ड्राइव, 159 फॉर 5, सो 160 का माइलस्टोन टच कर लेंगे। इस बार थर्ड मैन से निकाल दिया है, बॉल जारी है मैदान के बाहर की तरफ, लेकिन अब जाकर उसे रोका गया है और 2 रन पूरे किए समीर ने। ये मैच में समीर का भी बहुत व्यावसायिक अभिगम नजर आ रहा है। 161 5 विकेट के नुकसान पर 15 चौके इस पारी में लगे हैं और 3 6 लगे हैं। आखिरकार विनय का एक खर्चीला मैच समाप्त होने जा रहा है। जहां तक बॉलिंग का सवाल है, विनय पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आ पाई। 4 ओवर 48 रन 1 विकेट, 19 ओवर 161। विनय 4 ओवर 48 रन 1 विकेट, और अब आसित शाह आखिरी ओवर करेंगे इस पारी का। 3 ओवर 24 रन 1 विकेट। आसित का पहला ओवर खर्चीला था, लेकिन उसके बाद वाले 2 ओवर्स ये बहुत ही लाजवाब रहे थे। आसित का ही ओवर था जहां ऋषित केतन शाह को उन्होंने 3 डॉट बॉल की और उनको स्ट्रोक के लिए ललचाया और विकेट लिया था। ओवर पिच बॉल ड्राइव कर दिया है यहां पर, हर्ष संघवी ने रोका। 2 रन लेते हुए मिहिर 163 5 विकेट पर। मिहिर अर्धशतक से 2 कदम दूर। और इसके साथ ही वहां पर मिहिर अपना अर्धशतक पूरा करने जा रहे हैं। ये 50 बेशकीमती रन बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए मिहिर शाह का फॉर्म में आना बहुत जरूरी। एक समय था जब 13 पर 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बाद मिहिर और ऋषित के बीच में पार्टनरशिप हुई। मिहिर आज धीर गंभीर नजर आए। 165 पर 5। आज गंभीर है एसके स्ट्राइकर्स के मिहिर, और यही वजह है कि वो खा रहे हैं रनों की खीर। 165 पर 5। बहुत ही प्रभावशाली बल्लेबाजी का प्रदर्शन है एसके स्ट्राइकर्स द्वारा। पिछले रविवार को जो जीत मिली है, उसके बाद ये टीम लय में आती हुई। यहां पर एक कैच उड़ा था, मनीष के 1 मीटर आगे गेंद ने टप्पा खाया था, वहां पर 1 रन मिहिर के नाम। स्कोर 166 5 विकेट के नुकसान पर, 166 फॉर 5। आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5, मैच नंबर 11। टफ ब्लास्टर्स टॉस जीतकर बॉलिंग कर रही है। पहली पारी समाप्ति की ओर बढ़ती हुई। बेहतरीन टेलीकास्ट फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर की ओर से। ड्राइव किया 1 रन।
167 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब इस पारी की आखिरी गेंद, क्या मिहिर इस पर कोई 6 लगा के 170 पार कर देंगे? 34 गेंदों में 51 रनों की एक उपयोगी पारी मिहिर सुरेश कुमार शाह द्वारा। इस बार भी एक शालीन ड्राइव था, 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़, मानिक शाह वहां पर रनआउट करने का प्रयास करते हुए और 2 रन पूरे करते हुए मिहिर सुरेश कुमार शाह। इन 2 रनों की बदौलत अब फाइनल स्कोर जो है वो 20 ओवर की समाप्ति पर अगर देखें तो 169, करंट रन रेट 8.45। देखिए बहुत बढ़िया कैमरा वर्क। और मैच जीतने के लिए 120 गेंदों में 170 रन चाहिए। 15 चौके 3 छक्के लगे इस पारी में, 15 वाइड के रन्स। लौटेंगे बहुत जल्द दूसरी पारी में। You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy.
You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy.
You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy. मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। It's PPL पाटन प्रीमियर लीग, It's PPL पाटन प्रीमियर लीग। यही तो जज्बा है, हमें खेल में लड़ना है, चाहे लड़ ले जितना भी हमें संग रहना है। यूं तो है जुदा जुदा एक ताकत बनना है, हम हैं एक पंजे के एक मुट्ठी बनना है। Let's do it, let's hit it, let's play fair all the way. It's PPL, let's win it, let's beat it. Let's play fair all the way. It's PPL. मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। It's PPL पाटन प्रीमियर लीग, It's PPL पाटन प्रीमियर लीग। यही तो जज्बा है, हमें खेल में लड़ना है, चाहे लड़ ले जितना भी
हमें संग रहना है। यूं तो है जुदा जुदा, एक ताकत बनना है। हम हैं एक पंजे के, एक मुट्ठी बनना है। Let's do it, let's hit it, let's play fair all the way. It's PPL, let's win it, let's beat it, let's play fair all the way. And, welcome to all of you wherever you are watching this live telecast of Saurin Shah Presents Patan Premier League Season 5, match number 11, second innings. Tough Blasters chasing 170 of 120 balls, as Suchit Jairaj Shah and Ankit Sunil Shah are the two batters, and Sahil Shah is the bowler. Kavish Zaveri is in first slip. Bhavik Shah is the wicket keeper. First delivery slanting away from the right-hander. Finally some sunshine kissing this ground. Suchit Jairaj Shah, he's playing multiple roles in this tournament, as an owner, as a skipper, as an all-rounder. Over pitch delivery driven firmly, but that square drive will get him a single. Score 1 without loss. We saw 15 boundaries and 3 sixes in the first innings, and they would want to Xerox those boundaries and sixes in the second innings. Required run rate 8.59. So special thanks to Sri Patan Jain Mandal, the spearhead of social activities in Patan Jain community. That ball deviated too much and will be given wide by umpire Prathamesh Angne, who is at the bowler's end. Batter is Ankit Sunil Shah, who played well in the last match, provided good stand with Suchit. Score 2, 168 more to win. Slapping that delivery. Good thing is he was able to tab it in such a way that ball travelled across the ground. Score 3 without any damage. We are thankful to our trophies sponsor, Healthy Crunch by Monica Shah. Wicket sponsor, Smith Engineering Company. Maximum sixes of the match
Patni Opticians, Team Player Award of the Match, Selfie Design, Man of the Series, sponsored by MT Madan and Company. This time a straight drive, lucky to have survived. That could have been a blinder. And Rishit Ketan Shah stops the ball right in front of the side screen for a single. 4 without loss. Medical sponsors are Healing Pharma Private Limited. Your health is our world. Jerseys and kits are sponsored by JP Hairpins. Goodies are sponsored by Warmio, Love Freshly Served. Hydrating sponsor White Divine. Stump to stump and a dot ball. We are thankful to our broadcasting sponsors, Philco Trade Center Private Limited. Lovely telecast on YouTube is courtesy them. Cricket balls are sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly. Boundaries are sponsored by We Jewels, Jewels by Varsha Exports. A brilliant fielding. There's a risky run, but finally grounding the bat, he finishes it. Well, they got to apply pressure like this on the fielders. 5 without loss at the end of 1 over. 165 required now to win the match of remaining 114 balls, and required run rate 8.68. So Sahil Shah getting some first aid, and Jaivir, who is the fan of Sahil Shah. Sahil Shah, a very handsome personality, like a Yorkshire man, got a blinder catch of Suchit, but couldn't quite hold it. So we start the fresh over from the far end, and Mihir Shah, a lovely half century followed by a bowling performance that we all wait. We are also thankful to our app and man of the match sponsor SK, we serve since 1932, and catch of the match sponsor Trinity Entertainment. Mihir Shah. First delivery, keeping low, punching it for a single. Score is 6 without loss. Top Blasters are chasing 170 of 120 balls. Suchit Jairat Shah this time trying to open the face of the bat and take a single. Fielded very well by Sagar at wideish third man, and immediately gets applauded by wicketkeeper Bhavik Shah. So Sagar at wideish third man, Dhwanil and Gully, Samir at point, Kavish at extra cover, Harshal at mid-off. Score 8 runs. We saw 15 wide runs in the first innings, 15 boundaries and 3 sixes. And one thing that Tough Blasters batters will have to keep in mind is to hit those regular boundaries and sixes. Tossed it up. Suchit not at all ready to go for a big stroke. Places it behind the square for a single, but that will be a leg by. It's a slow start right now. 9 without any loss.
tossed it up and oh, he has given it a whack so beautifully, and that's V Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. Ankit Sunil Shah starts in style. 2 overs, 15 runs. Now 108 balls and 155 to win. Current run rate 7.5. Ankit 10, Suchit 3. Mihir 1 over, 9 runs. Sahil Shah to continue his second over. Required run rate right now is 8.61. And that shouldn't be a worry as long as it is below 9.5. Here's how I do it. Power play score is also going to be a deciding factor in this match, because power play score also allows you to lay a strong foundation on which you can go ahead and build a skyscraper of runs. It's a big score that they are chasing. Goes on the back foot and whacks it. Clinically played by skipper, and that's a captain's shot. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Clever placement of that delivery, went on his back foot. Sahil is already injured, and it will be interesting to see how he bowls from here on. A slower leg cutter and 4 valuable runs. Score 19. Suchit this time mistimes it. Harshal gets a dolly, and that's a Trinity Entertainment catch of the match. And Smith Engineering Company wicket number 1. Sahil Shah cut down on the pace. Had a teaser for Suchit Jairaj Shah, who would love to go for his strokes, and played away from his body. The ball that was travelling about half a meter away from the channel, and a sitter taken by Harshal Shah. So Trinity Entertainment catch of the match. 7 runs for Suchit Jairaj Shah and 19 for 1. New man in, Manit Shah. Manit Shah, the wicketkeeper come batter, wearing jersey number 7. Well, few jersey numbers you can never forget, like jersey number 7 in football for Cristiano Ronaldo, and probably in cricket you would relate it with Mahendra Singh Dhoni. Sahil Rajesh Shah, although got injured on one of his fingers, but he has that never say die attitude. I just simply love this Patan cricketers. Whenever they play with passion. They play to perform. They play to win. And Sahil Rajesh Shah, the cricket pedigree runs deep down in his blood. Getting ready to bowl to Ankit Sunil Shah. Ankit driving this, and slightly misfilled, and that will rest to the fans for 4. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports 4. Superb timing. Not much power behind the stroke, just the timing and placement. And because it is power play, Rishit had to cover a long ground. So was Mihir Shah. And look at the camera work. They followed the ball right till the end. Superb job by Shiva and team. 23 for 1.
Ankit on 10 of 7. Driven nicely in V. Takes a single. Mihir the fielder. "24 runs for the loss of 1 wicket. 146 required of 104. Required run rate 8.42. So one thing that both the batters would want to keep in mind is always the required run rate. They would want to keep it below 9 at any point in time, and if possible between 8 to 8.5. Sahil this time, he drew the batter forward. Manit very tentative in his footwork as he has just arrived, doing a bit of gardening there, leveling the surface. "24 for 1. SK Strikers scored 169 batting first after being invited by Turf Blasters. 170 is the magic number to win the match. So that good line delivery placed well, single. Samir the fielder, nicely backed up by Rishit Ketan Shah. End of over number 3, 25 for 1. Ankit on 15. Only 1 wide so far in this innings, compared to 15 wide runs in the first innings. Start the fresh over from SK Club and Resorts End. Today the matches are being played at Kavirni Sports Arena near Gorai Creek, Link Road, Borivali West. This ground has made a big progress in last 1 year or so in terms of facilities and infrastructure. Playing with soft hands, Manit couldn't quite connect it and collected neatly by Bhavik Shah. 25 for 1. Kavish Zaveri is in first slip for Mihir Shah. Sahil is at Widish Gully. Dhwanil is at second gully. There is an appeal and the decision is referred to third umpire. Brilliant glove work by Bhavik, and Manit couldn't believe his luck. Will this be a Smith Engineering Company wicket? Third umpire will tell us. The way Kavish had a run, he is confident that Bhavik Shah has done a brilliant glovesmanship. And third umpire will take the decision.
So Smith Engineering Company, wicket number 2 falls, and Manit Shah stumped Bhavik Shah, bowled Mihir Shah, and Newman is Nirav Mahindra Shah. So Manit slightly tentative in his footwork when he arrived at the crease. The first delivery that he faced, even now also, he was in hurry to offer a stroke to Mihir Shah, and Mihir Shah is one such bowler with a caliber of taking wickets. He had just delivered a teaser for Manit, and Manit gets out. A wicket that wouldn't have been lost. Unfortunately, it's a big loss. 25 for 2. Nirav Mahindra Shah is the batter. So today is our last day at Borivali. Next week we are traveling to Surat Lalbhai Contractor Stadium, which is a List A ground where Ranji Trophy matches have been played in Gujarat, and we'll be enjoying the hospitality of Surat. Surat, known throughout the world. In Gujarati there is a saying, Surat nu jaman ane Kashi nu maran. Surat is known for so many dishes, right from undiyu, umbadiyu, locho, ghari, and we'll be having all those delicacies in Surat next weekend. Probably I may show you some pictures also from there. The only thing I can say is Surat ni ghari ne Surat no locho આવતા અઠવાડિયે રમવા માટે સુરત પહોંચો. 25 for 2. Trying to play with soft hands. Single. Dhwanil came running in. Bhavik Shah has done excellent wicket keeping, and that's what I was talking about in the morning. All the 6 wicket keepers for 6 teams have done a great job, although we are missing Pankit of Physio Knee Smashers due to an injury, but Madhur Salvi has done a great job in his absence. Similarly, in absence of Viral Shah, Viral played yesterday. He got a deep wound on his eye line, but Jigar Shah stepped into his shoes as a wicket keeper. So even Jigar has done a remarkable job. 26 for 2, 4th over. This time goes on the back foot, takes a single. Harshal the fielder. ચાર ઓવર 27 રન 2 વિકેટ. આપ જોઈ રહ્યા છો સૌરીન શાહ પ્રેઝેન્ટ્સ પાટન પ્રીમિયર લીગ સિઝન 5. નવી ઓવર કરવા માટે આવી રહ્યા છે સાહિલ રાજેશ શાહ. આ ઇનિંગ્સમાં અત્યાર સુધીમાં 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગો લાગેલ છે. મિહિર 2 ઓવર 11 રન 1 વિકેટ. પહેલી ઇનિંગ્સમાં આપણે 15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા જોયા હતા. આ સુંદર ટેલિકાસ્ટ તમે પાટન પ્રીમિયર લીગના યુટ્યુબ ચેનલ પર જોઈ રહ્યા છો. ફિલ્કો ટ્રેડ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અમારા બ્રોડકાસ્ટિંગ પાર્ટનર, જેમના કારણે આ મેચ ઓનલાઈન જોવી શક્ય બની છે, એમનો આભાર. નવી ઓવરનો પહેલો દડો બેકફૂટ પર જઈને સુંદર સ્ક્વેર કટ મારી હતી, પરંતુ એક જ રન મળશે. ઘણીવાર એવું થાય કે ફટકો સારો માર્યો હોય પરંતુ રન જે મળવા જોઈએ ન મળે. સ્કોર 28, 2 વિકેટે. આ સ્થિતિમાં લગભગ આપણે બધા જ મુકાઈએ છીએ. ઘણીવાર આપણે જોબ કરતા હોય, આખું વર્ષ સારી મહેનત કરી હોય,
અને આપણને લાગે કે 20% પગાર વધારો મળશે, પણ એની જગ્યાએ 8% મળે. ઘણીવાર આપણે કોઈ નવો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો હોય એમ લાગે કે 30% નફો મળશે અને છેલ્લે બ્રેક ઇવન પર આપણું ફાઇનાન્શિયલ વર્ષ પૂરું થાય. એવી સિચ્યુએશન ઘણીવાર ક્રિકેટમાં પણ થાય. ફટકો સારો હોય પણ ફિલ્ડર રોકી લે અને 4 કે 6ની જગ્યાએ 1 જ મળે તો સ્કોર 28, 2 વિકેટે 170 રન બનાવવાના છે મેચ જીતવા માટે ટર્ફ બ્લાસ્ટર્સે. ફટકો સારો હતો આ વખતે નીરવનો. નીચો રહેતો દડો અને એને ફક્ત બેટથી દિશા આપી હતી, પરંતુ ધ્વનિલે ગલીમાં બોલ રોક્યો હતો. ₹28 2 વિકેટે. ફિલ્ડિંગમાં હજુ થોડો બદલ જોવા મળેલ છે. કવિશે પોતાને હવે વાઇડિશ થર્ડમેન પર લઈ ગયા છે. એક ગલી, એક પોઈન્ટ, એક કવર પોઈન્ટ, એક શોર્ટ એક્સ્ટ્રા કવર અને એક શોર્ટ મિડ ઓફ. ફરી એકવાર બેટથી દડો રમ્યા હતા ગલીમાં. ₹28 2 વિકેટે 5મી ઓવર. નીરવ મહેન્દ્ર શાહે લગભગ 2 થી 3 સારા ફટકા ગલીમાં માર્યા હતા, પરંતુ ગલીમાં રન નથી મળી રહ્યો. આ વખતે વાઇડિશ લોંગન પર રમ્યા હતા. 1 રન હર્ષલ થ્રો કરી રહ્યા હતા. ₹29 2 વિકેટે. આજે ટ્રિનિટી એન્ટરટેનમેન્ટ કેચ લીધો હતો હર્ષલે, જ્યારે સૂચિત જયરાજ શાહને તેઓએ આઉટ કરાવ્યા હતા. પહેલી સ્મિથ એન્જિનિયરિંગ કંપની વિકેટ હતી અને બીજી સ્મિથ એન્જિનિયરિંગ કંપની વિકેટ હમણાં જ આપણે જોયો માનિત આઉટ થયા હતા. આ વખતે ઓવરપીચ દડો ગેપમાં રમ્યા હતા અને આ સાથે સુંદર ચોગ્ગો. વી જ્વેલ્સ 4, જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ. અંકિતે માનો પોતાના બેટ વડે બોલ ઉપર પોતાનું નામ અંકિત કર્યું હતું અને 4 રન લીધા હતા. 33 રન 2 વિકેટે 5મી ઓવર રમાઈ રહી છે. પાવર પ્લેની પહેલી 6 ઓવર એ ખૂબ મહત્વની રહેશે. આ વખતે બોલ નીચો રહ્યો હતો, સબમરીન બોલ જેને ક્રિકેટમાં કહેવાય, અને ઓવર પૂરી થયેલ છે. 5 ઓવર બાદ સ્કોર 33 2 વિકેટે. પહેલી ઇનિંગ્સમાં પહેલી 5 ઓવરમાં 25 રન હતા અને 2 વિકેટ પડી હતી, જેના જવાબમાં બીજી ઇનિંગમાં પહેલી 5 ઓવરમાં 33 રન અને 2 વિકેટ. આ સ્ટેજ ઉપર 8 રન તેઓ આગળ છે, પરંતુ આ એક એવો સમય હતો જ્યારે બહુ મોટી ભાગીદારી જોવા મળી હતી. અને હવે નવીન બોલિંગ માટે સમીર શાહ ઉર્ફ સેમ. સેમે આજે તોફાની બેટિંગ કરી હતી. આ વર્ષે પાટણ પ્રીમિયર લીગમાં સમીરે બહુ કરકસર ભરી બોલિંગ કરી છે. અને આ જ કરકસર ભરી બોલિંગ તેઓ આગળ કરે એવી શુભેચ્છાઓ તેમની ટીમના મેમ્બરો આપી રહ્યા છે. પરંતુ અત્યારે પાવર પ્લેની આ છેલ્લી ઓવર છે અને નીરવ મહેન્દ્ર શાહ એ સમીર શાહ સામે શું મોટો મોરચો ખોલશે કે એમને સન્માન આપીને સાવધાની ભરી રમત બતાવશે, એનો બધાને ઇંતજાર છે. 3 ચોગ્ગા ને 1 છગ્ગા અત્યાર સુધીમાં લાગ્યા છે 5 ઓવરમાં.
બેકફૂટ પર જઈને રમવા ગયા અને ઝીલાઈ ગયા. ધ્વનિલના હાથમાં કેચ આપી દીધો નીરવ મહેન્દ્ર શાહે. ટ્રિનિટી એન્ટરટેનમેન્ટ કેચ ઓફ ધ મેચ અને સ્મિથ એન્જિનિયરિંગ કંપની વિકેટ નંબર 3. સમીરને લાવવાનો દાવ સફળ અને ધ્વનિલે લીધેલો કેચ. નીરવ મહેન્દ્ર શાહ બહુ ઉતાવળા હતા અને એક વસ્તુ પાકી છે, ઉતાવળે આંબા ન પાકે. પીચ ઉપર ઊભા રહેવું બહુ જરૂરી હતું, પરંતુ તેઓ રન રેટ વધારવા ગયા અને થાપ ખાઈ ગયા. ધ્વનિલે દિલ ખુશ કરી નાખે એવો કેચ લીધો. ટ્રિનિટી એન્ટરટેનમેન્ટ કેચ ઓફ ધ મેચ અને ત્રીજી વિકેટ પડી છે અહીંયા આગળ સ્મિથ એન્જિનિયરિંગ કંપની વિકેટ નંબર 3. બિલકુલ ડાઈવ મારી દીધી હતી અને જમીન ઉપર ભાંખોડિયા ભરતા જેને કહેવાય ને એવો કેચ લીધો હતો. અને જ્યારે આવા કેચ લેવામાં આવે ત્યારે પૂરી ટીમ જે છે એ પ્રોત્સાહન મેળવે છે. 33 રન 3 વિકેટે. પહેલી ઇનિંગમાં જ્યાં આપણે ત્રીજી અને ચોથી વિકેટ માટે ભાગીદારીઓ જોઈ, અહીંયા અંકિત સુનિલ શાહ એકમાત્ર કમિટમેન્ટ સાથે રમી રહેલા જણાઈ રહ્યા છે. નવા બેટર છે ભાવિક. અને આ ડગઆઉટનું દ્રશ્ય માનેત દેખાઈ રહ્યા છે, તેમની સાથે મનીષ, હર્ષ સંઘવી, વિલેશ સાળવી, જીગર સાળવી. ઘણા ઓપ્શન્સ છે, પરંતુ મિડલ ઓર્ડરમાં કોકે સારી રમત બતાવવી પડશે. ઉતાવળ અત્યારે કેટલી મોંઘી પડી એ આપણે જોયું માનિત અને નીરવ મહેન્દ્ર શાહના વિકેટમાં. ચાહે બેટિંગ હોય કે રસોઈ હોય, ઉતાવળ નહીં કરવી. કુકર મૂક્યું હોય તો 4 સીટી વાગવા દેવી. એવી જ રીતે જ્યારે બેટિંગમાં જાઓ તો ભલે 4 બોલ આપણે રન ન બને, પરંતુ ઊભા રહેવું જરૂરી. આ વખતે થર્ડ મેન પર 1 રન લીધો હતો. મિહિરે બોલ થોભાવ્યો હતો. ચોત્રીસ રન 3 વિકેટે 170 રન બનાવવાના છે વિજય અને 4 અંક મેળવવા માટે. અમ્પાયર અને સ્ટમ્પ્સની વચ્ચેથી ત્રાંસુ દોડીને આવી રહ્યા છે અત્યારે સમીર શાહ ઉર્ફ સેમ. સ્ટમ્પની નજીક આવીને ફાઇટર દડો હતો. બેટનો નીચલો ભાગ લાગીને બોલ હવે જઈ રહી છે અને બાઉન્ડ્રી લાઇન પર પહોંચી ગયેલ છે. આ સાથે વી જ્વેલ્સ ચોક્કો જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ. આડત્રીસ 3 વિકેટે હવે 86 બોલમાં 132 જોઈએ છે. પહેલી ઇનિંગમાં વારે ઘડી આ વાત કહેવાના પાછળ ભાવાર્થ એટલો જ છે કે પહેલી ઇનિંગમાં 20 ઓવરમાં 15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા લાગ્યા હતા, એટલે 18 મોટા ફટકા લાગ્યા હતા. અને એવા જ 18 નબળા બોલ અથવા 18 મોટા ફટકા આ દાવમાં મારવા પડશે. ઓવરપીચ દડો હતો. અંકિત શાહ ડાબો પગ આગળ લઈ ગયા હતા અને સારું ડ્રાઈવનો ફટકો. 38 પર 3. ફરી એકવાર અંદરનો ભાગ આ વખતે જોવાનું રહેશે. બેટને લાગ્યું છે કે નહીં. બોલ ગયો છે શોર્ટ સ્ટોપ પર. રૂબી કટ જેને કહેવાય છે, ઇનર એજ ઓર ઇનસાઇડ એજ જેને કહેવાય ક્રિકેટમાં. રૂબી કટ, ચાઇનીઝ કટ, લેમન કટ, ઇંગ્લિશ કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં એને સ્ટેફર્ડશાયર કટ પણ કહેવામાં આવે છે. 6 ઓવર 39 રન 3 વિકેટ. અંકિત 16 બોલ 25, ભાવિક 2 બોલ 1, સમીર પંકજ શાહ 1 ઓવર 6 રન 1 વિકેટ.
You know, I like my things personalized. Here's how I do it. खेल की शुरुआत होती हुई साहिल शाह लगातार चौथा ओवर अपना अंजाम करेंगे। 39 फॉर 3, वाइड बॉल। 40 फॉर 3। निशित शाह ने कुछ समय पहले मिहिर शाह को कहा कि आपके बाजू में 2 डॉगी है, उसके बीच में आप खड़े हैं, थोड़ा संभालिए। जैसे गुजराती में बड़े बुजुर्ग लोग छोटे बच्चों को कहते हैं कुक्कू छे, साचे ऊपर से कुक्कू। एक और वाइड बॉल। देखिए 2 लगातार वाइड बॉल और ये अब 2 रन की मदद मिल चुकी है। पहली पारी में वाइड के 15 रन हमने देखे थे, दूसरी पारी में वाइड की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब तक 3 वाइड रन। साहिल अपने जूते की लेस को बांधते हुए। 84 गेंदे, 129 रन। जोखिम भरा रन था, आखिरकार क्रीज में पहुंच गए बैटर भाविक। (42 फॉर 3). साहिल राजेश शाह अब तक 24 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया है। गेंदबाजी में अभी भी कविश जवेरी अपने आप को नहीं लाए हैं। साहिल, मिहिर, सैम, इस बार बॉल जाकर पैड पर लगी। एक आवाज यहां तक सुनाई दी थी। भाविक का पद चापल्य, जिसको फुटवर्क कहा जाता है अंग्रेजी में, वो सही नहीं आया। देखिए एक चीज़ तो पक्की है, मोबाइल में नेटवर्क और बैटिंग में फुटवर्क, ये ज़रूरी है। 42 पर 3। लगातार गेंदें पैड को छू रही है। भाविक का थ्रो। एक भाविक दूसरे भाविक का खेल खलास कर सकता था। ये अलग बात है कि बॉल स्टंप्स के बाजू से चली गई। 43 फॉर 3। 4 चौके लगे हैं और 1 6 लगा इस पारी में, जो अच्छा माना जाएगा। हर ओवर में 1 चौका या छक्का आना ज़रूरी है। अगर इसको बिल्कुल सीधे साधे गणित में समझाया जाए तब जाकर 170 रन ये चेज हो जाएंगे। 5 ओवर के स्टेज में हमने देखा आगे चल रहे थे टर्फ ब्लास्टर्स। 10 ओवर के स्कोर पर भी हम नज़र रखेंगे। वाइड बॉल। 44 फॉर 3। साहिल की उंगलियों में चोट आने की वजह से वो क्या गेंदों को ग्रिप नहीं कर पा रहे, या लगातार चौथा ओवर करते समय वो थोड़ा थकान महसूस कर रहे हैं। कोई एक आध कारण जरूर है जहां इस ओवर में हमने 3 वाइड बॉल देखी है। ओवर पिच बॉल उठा दिया है मिहिर गेंद के नीचे, और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 4। और ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच मिहिर शाह के हाथों में, और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 4। स्कोर 44 और विकेट गिरा है चौथा। नए बैटर है स्मिथ शाह। बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस। कैच लेने के बाद तुरंत पीछे देखा कि कहीं मैं बाउंड्री लाइन के बाहर तो नहीं। एसके स्ट्राइकर्स नियमित अंतराल पर विकेट गिराते आ रहे हैं। अंकित सुनील शाह बहुत अच्छा खेल रहे थे। 19 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। 3 चौके लगाए, 1 6 लगाया।
रिक्वायर्ड रन रेट 9.45 का। स्मिथ शाह लिटिल मास्टर ऑफ ब्लास्टर्स के स्मिथ शाह ने काफ़ी प्रभावित किया था पिछले साल अपनी बल्लेबाजी क्षेत्ररक्षण के ज़रिए। कम ऊंचाई वाले जो खिलाड़ी है क्रिकेट में बड़ा नाम कमाए, ऐसे कई खिलाड़ी भारत और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर हमने देखे, जिसमें खास करके सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रमाकांत देसाई, जिन्होंने मुंबई और भारत का प्रतिनिधित्व किया। वेस्ट इंडीज़ के लिए कहे तो गस लोगी, जिम्बाब्वे के टटिंडा टाइबू, फोर्टी फोर फॉर 4, चारों विकेटें जल्दी गिरी है। भागीदारी देखने नहीं मिल रही है, जो बड़े दुख की बात है आज टर्फ ब्लास्टर्स के लिए। स्मिथ शाह साहिल शाह को शाबाशी देते हुए समीर शाह, रिक्वायर्ड रन रेट 9.57 का, 126 चाहिए 79 गेंदों में, और हर गुजरती हुई गेंद के साथ रिक्वायर्ड रन रेट कुछ डेसिमल पॉइंट्स बढ़ता जा रहा है। इस बार बहुत बढ़िया एंगल बनाया था उस गेंद ने, धीमी भी रही और बहुत ज़्यादा मुड़ी, अंगड़ाई लेती हुई बल्ले के बाजू से जागते रहो का आदेश देती हुई कैद हुई दस्तानों में भाविक शाह के। ओवर खत्म होता हुआ 7वां, 44 पर 4, 78 बॉल्स 126 टू विन। गेंदबाजी में तब्दीली, अब दूर वाले छोर से हार्दिक शाह को गेंदबाजी दी जा रही है। शायद ये पहला ऐसा मैच है जहां लगभग हम 8वें ओवर की तरफ आ गए और अभी तक कभी जवेरी गेंदबाजी में नहीं आए हैं। उनके पास निश्चित शाह नाम का भी एक बॉलिंग ऑप्शन है। तो आज दोपहर के मुकाबले के लिए दोनों टीमों का आगमन होने जा रहा है, कुसुम वॉरियर्स और एमटीएम राइडर्स। नए ओवर की पहली गेंद और भाविक ने पुल कर दिया विकेटों के सामने 1 रन। 45 पर 4, 170 रन बनाने हैं। फॉल ऑफ विकेट्स अगर देखें तो पहला विकेट 19 पर, दूसरा 25 पर, तीसरा 33 पर और चौथा 44 पर। ये वो समय था जब 2 भागीदारियां हमने देखी पहली पारी में, ऋषित केतन शाह और कविश जवेरी, और फिर ऋषित केतन शाह और मिहिर शाह, जो प्रमुख फर्क नजर आया। अब मध्यम क्रम के बल्लेबाजों में लिटिल मास्टर स्मिथ शाह इनके ऊपर दारोमदार रहेगा। हार्दिक की ये गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच लगाया, जोखिम कारक रन है और नॉट आउट।
भाविक शाह ने कलाबाजी बहुत अच्छी लगाई थी। विकेट कीपिंग एक थकाने वाला काम है, आमतौर पर आसान नहीं होता। बीस ओवर विकेट कीपिंग करके बैटिंग में आना या बैटिंग करके फिर 20 ओवर विकेट कीपिंग करना, ये चुनौती भरा काम रहता है। भारत के फारूक इंजीनियर, आज उनकी याद ताज़ा हो रही है। हमारे जो बुजुर्ग पाटन जैन समाज के इस मुकाबले को देख रहे हैं वो याद कर पाएंगे। ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर, इस बीच बैकफुट पर जाकर अच्छा स्ट्रोक खेला भाविक ने, 2 रन हासिल किए। फोर्टी 48 फॉर 4, 8th ओवर। धीमे से पुश किया। अब ये बहुत सही सोच भी है, स्कोर बोर्ड को गति में भी रख रहे हैं और स्ट्राइक को घुमा भी रहे हैं दोनों बैटर्स। एक 25-30 रन इस तरह से उनको बनाने होंगे। 10वें ओवर के अंत तक अगर कोई विकेट नहीं गिरती है और ये दोनों मिलकर एक 30 रन और जोड़ देते हैं तो वापस वो मैच में आ जाएंगे। कल देखा जिस तरह से आकाश ध्रुवा और केयूर बिपिन जवेरी खेल रहे थे कुसुम वॉरियर्स के सामने, आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5, 11वां मुकाबला। अगला मुकाबला दोपहर को खेला जाएगा कुसुम वॉरियर्स और एमटीएम राइडर्स के दरमियान। इस बार बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और कट किया था ध्वनिल के पास 1 रन स्मिथ शाह के नाम। 8 ओवर 50 रन, 4 विकेट। अब 120। बारह ओवर में 120 चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 10 का। पहली बार रिक्वायर्ड रन रेट 10 को टच करता हुआ और नया ओवर लेकर आ रहे हैं निशित शाह, निशित भूपेंद्र शाह। निशित शाह के नाम भी कैच ऑफ द मैच अवार्ड रहा है इस प्रतियोगिता में और उन्होंने विकेटें भी ली है गेंदबाजी करते समय। तेज हवा चलती हुई मैदान पर। बैटर है स्मिथ हितेन शाह।
निशित शाह नए ओवर की शुरुआत कर चुके हैं। बहुत तेज़ हवाएं चलती हुई इस मैदान पर, और हवा के साथ साथ घटा के संग संग अगर कुछ स्ट्रोक खेल दिए जाए बहती हवा के साथ, तो रनों का फ़ायदा हो सकता है टर्फ ब्लास्टर्स को। इस बार बहुत नज़ाकत के साथ लेट खेला था, बिल्कुल महिला जयवर्धने की याद करता हुआ वो वी ज्वेल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स 4। स्मिथ शाह की यह खास बात है, बहुत देर तक गेंद के टप्पा खाने का इंतजार किया और फिर केवल बल्ले से दिशा दी। थर्ड मैन पर कोई नहीं था, ऑफ स्टंप कवर किया और बहुत लेट खेले, ये सुनिश्चित किया कि वो बॉल रुकी नहीं जाएगी। थर्ड मैन का खिलाड़ी वाइड था, प्लेसमेंट फाइन थी और वी ज्वेल्स चौका। 54 पर 4। इस बार टैप कर दिया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट पर, 1 रन। 55 फॉर 4, 9th ओवर। आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। ये कुसुम वॉरियर्स टीम को दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पर। कल जिन्होंने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, 199 रन, देवेंद्र ध्रुवा का वो शतक कल पूरे चर्चा का विषय था पाटन जैन समाज में। इस साल 2 सेंचुरीज हमें देखने मिली, समीर पी शाह फिजियोनीश स्मैशर्स के और दूसरी देवेंद्र ध्रुवा द्वारा, और दोनों ही शतक बोरिवली के इस मैदान पर। 56 पर 4, 114 रन और चाहिए। गोराई एंड से निशित, इस बार बहुत बढ़िया लेग ब्रेक, उंगलियों का जादू बिखेरते हुए निशित। 1 ओवर 6 रन, 9 ओवर 56 रन, 4 विकेट। Sixty-six balls, 114 to win. Required run rate 10.36. भाविक शाह और स्मिथ शाह दो बैटर्स। आने वाले बल्लेबाजों में विनय शाह, विलेश साड़वी, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल लिया जाएगा। हार्दिक के नेवर की पहली गेंद उसको हुक कर दिया है और विकेटों के पीछे उसे स्टॉप किया गया है। 1 रन और। $57 for 4। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से आत्मविश्वास भरा स्ट्रेट ड्राइव और बॉल जाती हुई सीधा साइड स्क्रीन की तरफ। ये लगा बेहतरीन वी ज्वेल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स।
61 for 4. (61 for 4). 109 रन और चाहिए। इस बार पुल करने का प्रयास था, भाग्यशाली रहे स्मिथ शाह, क्योंकि फॉलो थ्रू में हार्दिक जो थे वो थोड़ा धीमे पहुंचे अपने दाहिनी ओर, वरना कैच हो सकता था। 62 पर 4। इस पारी में अब तक 6 चौके लगे हैं और 1 सिक्स लगा है, जबकि इसके बनिस्बत पहली पारी में हमने देखा 15 चौके लगे थे और 3 सिक्स लगे थे। यही बड़ा फर्क है, एबिलिटी टू कन्वर्ट एंड प्ले बिग शॉट्स। 15 वाइड रन ये भी भूलने नहीं होंगे, जो गेम चेंजर बन सकते हैं। खैर अभी भी बहुत सारा क्रिकेट बाकी है इस मैच में। वाइड बॉल 63, 4 विकेट पर 63 for 4। बल्ले के मुंह को खोलते हुए दिशा दी थी कवर पॉइंट की जानिब। 1 रन। 4 विकेट के नुकसान पर अब 64 रन बने हैं। स्मिथ 12 पर, भाविक 9 पर। बीस रन की पार्टनरशिप ये दोनों के बीच में 5वें विकेट के लिए। 62 गेंदे, 106 रन। इस बार स्क्वायर कट लगा दिया। जब नाटे कद के यानी कि छोटे कद के खिलाड़ी स्ट्रोक्स खेलते हैं तो बहुत दिलकश नजर आते हैं। 65 पर 4। रिक्वायर्ड रन रेट अब ऊपर चढ़ता हुआ 10.33। रन काफ़ी धीमे बन रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये बढ़ेंगे। इस बार थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी गेंद। ये लगा वी ज्वेल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स 4। कम से कम 7 से 8 चौके ऐसे और चाहिए होंगे। 10 ओवर का खेल समाप्त। 69 for 4। Here's how I do it. It's that easy.
Zooms after drinks a double. 101 required of 10 overs and required run rate 10.10. Nishit Shah starts the fresh over for Smith Shah. Comes closer to the stumps and bowl a wide leg spin delivery. Extra added. 70 for 4. 7 boundaries and 1 6 hit so far in this innings. Another wide, 71 for 4. So slowly the number of wides have started increasing and it has reached 7 now. 7 wides. We saw 15 wide runs in the first innings. So they are catching up on that as well. 71 for 4. Playing with soft hands. Single towards Rishit. $72 for 4. We welcome all the viewers who are watching this live telecast on Patan Premier League YouTube channel. Courtesy Philco Trade Center Private Limited, our broadcasting partner. Round the wicket for Bhavik and pushes it for a single. Still no signs of aggression. Both these batters know that they have worked hard. They have got the start. Whether they have got the sustainability is a $1 million question. 73 for 4. Going for a big shot, may get catch out and a dolly dropped. That is the dolly that was dropped. And just 1 run. Smith Shah dropped on 14. We saw Jigar Shah was dropped yesterday off a difficult chance, but he went on to score 40 odd runs. You can't afford to drop catches like this. This time trying to pull the ball, they go for a single. Still no sign of Kavish Zaveri coming to bowl. $75 for 4. Required run rate still above 10. Once again, intelligent placement. Smith Shah is an accumulator of the runs and he missed out on the last time opportunity of scoring big. But today is one day when he can rise to the occasion and come to party. 76 for 4. Flighted delivery has mistimed it. Will this be caught? Harshal Shah gets a second catch of the match. Trinity Entertainment catch of the match. And Smith Engineering Company wicket number 5. Big success to Nishit Shah. Bhavik slightly into hurry and has thrown away his wicket. New batter in is Harsh Sanghvi. They still have Vilesh Salvi, who is an accomplished scorer and cricketer.
You know, I like my first delivery of the match consistently. It, it is either his first ball or it is batter's first ball. He has won the battle. This time goes on the back foot and places it for single. $77 for 5. Current run rate still below what is required, but they can capitalize any point in time. They would just need a couple of loose overs of maybe 15-20 runs each. Full toss delivery and driven firmly. Nice use of feet and single. 78 for 5. Just when the partnership was blossoming, Bhavik threw away his wicket. Single. Nishit the fielder. "32 runs partnership ended between Bhavik and Smith Shah, which was the highest partnership for any wicket in second innings. This time trying to play behind the square and good throw from Bhavik. Almost went up to short fine leg. "80 for 5. This time cross batted stroke. They will take a single. 81 for 5. Harsh Sanghvi had some useful contributions last year. I think he represented SPS Superstars last year. 81 for 5. 49 balls, 89 runs. Difference of 40. They need 7 loose balls to play 7 big shots. This time bowling on the leg side, and it will be an over. 12 overs, 81 for 5. Smith 17, Harsh 3. Samir 2 overs, 10 runs, 1 wicket. So you're watching Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5. Special thanks to Sri Patan Jain Mandal for their support, and there is a bowling change. Mihir Shah, who bowled his initial overs from the far end, now bowling in from commentary box end, or rather the Gorai Creek end. Batter facing him is Harsh Sanghvi. This lovely broadcast is coming to you courtesy Philco Trade Center Private Limited. We are thankful to all our sponsors. Trophies, Healthy Crunch by Monica Shah. Wickets sponsored by Smith Engineering Company.
Gentle push, square of the wicket, and a single. Maximum sixes sponsored by Patni Opticians. Team Player Award sponsored by Selfie Design. Man of the Series sponsored by MT Madan and Company. Medical sponsors Healing Pharma Private Limited. Your health is our world. Jersey and kit sponsored by JP Hairpins. Goodies sponsored by Vomeo. Love freshly served. An inside out shot and slapping that delivery so smartly, and that's a little master stroke. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Welcome boundary, 86 for 5. We are thankful to our hydrating sponsors, White Divine, broadcasting sponsors, Philco Trade Center Private Limited, Balls sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly. Boundaries by V Jewels, Jewels by Varsha Exports. App and Man of the Match by SK, we serve since 1932. And Catch of the Match, Trinity Entertainment. Single, 87 for 5. "87 runs, 5 wickets. This time a single. "89 for 5. End of over number 13, 89 for 5. ઓવર કરતા હોય અને આજે દિવસ છે. નિશિતે સારી બોલિંગ કરી આજે, હાર્દિકે સારી બોલિંગ કરી છે, સાહિલે અને સમીરે રંગ ભરેલ છે બોલિંગમાં. આજે સૌથી સારું શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ રમ્યા છે. રિશિત કેતન શાહે એમને સારો સપોર્ટ આપ્યો. કવિશે પણ આજે બેટથી રન બનાવ્યા હતા. નવી ઓવરનો પહેલો બોલ, સ્ટ્રેટ ડ્રાઈવ મારેલ છે. ખૂબ દૂરથી આવવાનું હતું, છલાંગ મારી દીધી હતી, પરંતુ એ કામમાં નહીં આવે. વી જ્વેલ્સ ચોક્કો, જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ. બેટિંગનો ભરપૂર આનંદ લઈ રહ્યા છે સ્મિત શાહ. પડી અમ્પાયરના માથા ઉપરથી આ માથાભારે ફટકો હતો. વી જ્વેલ્સ ચોક્કો. અમ્પાયર કિરણ પુરંદરે પોતાની જગ્યા ઉપર ગોઠણીએ બેસી ગયા હતા અને હવે મોટા ફટકાની જરૂર છે, કારણ કે રિક્વાયર્ડ રન રેટ 11.27. 93 રન 5 વિકેટે.
એક રન હજુ મળેલ છે. 94 પર 5. 170 બનાવવાના છે. 94 થયેલ છે. રિક્વાયર્ડ રન રેટ 11.40 છે અને બહુ જલ્દી બહાર થઈ જશે, એટલે કે દરેક બોલ પર 2 રન બનાવવાના રહેશે. સ્મિત શાહ 22 બોલ 26. સારી રમત. હર્ષ સંઘવી ધીમેથી પુશ કરીને 1 રન લીધેલ છે. પંચાણું પર 5. 9 ચોગ્ગા લાગેલ છે અને 1 છગ્ગો આ બીજી ઇનિંગ્સમાં, જ્યારે પહેલી ઇનિંગ્સમાં 15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા લાગ્યા હતા. આ મોટો ફરક રહેલ છે અત્યાર સુધી. આ વખતે હવામાં ફંગોળીને રમ્યા હતા અને સરળ કેચ છૂટેલ છે. કેચ તો છૂટ્યો પરંતુ બોલ પણ મેદાનની બહાર, અને આ કેચ મોંઘો પડશે. વી જ્વેલ્સ ચોક્કો. જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ 4. બરાબર બેટ ઉપર લઈ શક્યા નહોતા, પરંતુ આટલો હળવો અને સરળ કેચ તમે છોડી ન શકો. આ પહેલાં પણ સ્મિથને એકવાર સમીર શાહે જીવનદાન આપ્યું હતું. નવ્વાણું પર 5. કવિશા લાઇન અને લેન્થમાં ઘણા બધા ચેન્જીસ લાવી રહ્યા છે. $99 for 5. ટીમની સદી નજીક પહોંચેલ છે અને આ સાથે ટીમના 100 રન પૂરા થયેલ છે. અહીંયાથી 70 રન હજુ બનાવવાના રહેશે. 14 ઓવર બાદ 100 રન અને હવે બચેલ 6 ઓવરમાં 70 રન. રિક્વાયર્ડ રન રેટ 11.67. આજે અડધી સદી મારી હતી મિહિર શાહે, અને બોલિંગમાં પણ તેઓએ સૌને આકર્ષિત કર્યા છે પોતાની તરફ. 36 બોલમાં 70 રન. લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કામ છે, પરંતુ પ્રયત્ન કરવો રહ્યો. નવી ઓવરની પહેલી બોલ નીચે રહ્યો હતો. સ્મિથ 32 પર રમી રહ્યા છે. 26 બોલ લીધા છે 32 બનાવવા. ઓવરપીચ બોલ હવામાં છે. કેચ ઉડ્યો હતો નિર્જન ક્ષેત્રમાં. બોલ ટપી પડીને હવે બીજો રન લીધો સ્મિથે. $102 રન 5 વિકેટે. 68 રન હજુ જોઈએ છે. ઇનસાઇડ એજ લાગેલ છે અને ફાઇન લેગ પર કોઈ નથી. મોટો રન ત્યાં કરવો પડે એમ છે નિશ્ચિત શાહે, પરંતુ બોલ ફાઇન લેગ બાઉન્ડ્રીની બહાર લાગેલો. આ વી જ્વેલ્સ ચોક્કો. જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ 4. 106 પર 5. 11મો ચોક્કો લાગ્યો છે. 15 ચોગ્ગાના જવાબમાં 11 ચોગ્ગા હજુ લાગી ચૂક્યા છે. હજુ તો 20 ઓવર થઈ નથી.
અને જો આ રીતે જ ચોગ્ગા લાગતા રહેશે તો રન રેટ, રિક્વાયર્ડ રન રેટ 11.64નો છે. બે સારી ઓવર 15-15, 20-20 રનની જોઈ છે. Tapping it, single. Rishit the fielder. एक 107 रन 5 विकेटे 15મી ઓવર. આ વખતે શોર્ટ પિચ દડો તો કટ કરી દીધો છે. વી જ્વેલ્સ ચોક્કો. જ્વેલ્સ બાય વર્ષા એક્સપોર્ટ્સ 4. હર્ષ સંઘવીનો પહેલો આક્રમક ફટકો અને આ સાથે 4 રન. એકસો 11 5 વિકેટે બિલકુલ આ જ રીતે હવે બેટિંગ કરવાની રહેશે બંને બેટર્સે. સ્મિત શાહ 39, હર્ષ સંઘવી 11. હર્ષ સંઘવી અહીંયાથી એક 20 રન હજુ જોડી દે અને સ્મિત શાહ એક 20 રન હજુ જોડી દે. આ બે જો સારી બેટિંગ કરે તો રન બને એમ છે. और अभी और Good afternoon, friends, and welcome to match number 12 under Saurin Shah Presents Patan Premier League Season 5. Well, we have got our hydrating sponsors, White Divine, Mamta Shah representing White Divine, and my beloved friend Punit Shah, back from a pilgrimage. He is also our guest of the afternoon. We have got Rachit Kaushik Shah representing MTM Riders, and we have got Sahil Shah, not just the proud owner, but also the captain of Kusum Warriors. So we shall be doing the toss now. Heads is the call, and heads it is. So Sahil, I think it's no brainer, but still I would want to ask, what is your decision and why? We'll bat first because you saw yesterday we were very comfortable batting first, and I think that's what we'll do today as well. Was there any celebration after Devian's 100 while you guys went home? I couldn't go. I had to go out, but I'm sure the boys celebrated. Great. And are you satisfied the way Devan has come into form? In one match, Jinan took you out of the doldrums. Another match, Karan Zaveri played well. Now Devan Dhruva has played well. Captain Cool to come and deliver with runs. Yeah, I think that even today I won't get batting. I'm sure the top order will fire today. I'm happy if I don't get batting and the top order makes sense. That's where our strength lies, and that's Great. Any changes? no changes. We're playing the same team. Thank you so much. Rachit, what decision you would have taken if you would have won the toss? Also be looking to bat first today. Now we are going to bowl first. Looking at the batting strength and the depth in the batting order, any particular target that you have in mind to restrict Kusum Warriors? Below 150, anything would be good for us. And any changes that you are making in the side today? We are making one change. We have Pratik out and we are getting another Pratik in for him. No other changes. Great. Any key learning from yesterday's game?
the top order needs to fire. That is where we need to work a bit, and a bit of fielding improvement is also required. So that are the two areas we are looking to improve today. Well, great. Wish you good luck. So, news from the middle is Kusum Warriors have won the toss and they have decided to bat first, and MTM Riders will be bowling first. This match goes live in half an hour from now. Thank you. एक 115 पर 5, 16वां ओवर. कविश जवेरी. इस बार स्मिथ शाह ने ड्राइव कर दिया है. अब ये मुकाबला दोनों तरफ जा सकता है. ज़रूरत है डटकर खड़े रहने की. स्मिथ शाह 42 पर खेल रहे हैं. कविश अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं. 16 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया. 116 पर 5. इस बार यॉर्कर लेंथ की बॉल थी. बैकलिफ्ट को नीचे रखा, बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने बल्ले से डिफेंड किया अपने विकेट को. स्कोर 117 पर 5. 117 for 5. बारह चौके और एक सिक्स लगा है. में गेंदबाजों को बॉलिंग करवाना और उनके छोर को बदलवाते रहना. कल हमने साहिल शाह को भी ये करते हुए देखा था. अंबिश को भी हमने ये करते हुए देखा. जैसे बैटिंग ऑर्डर में रोटेशन आता है, वैसे बॉलिंग ऑर्डर में भी रोटेशंस बहुत ज़रूरी है. छोर को बदलना उसमें एक अहम हिस्सा. वाइड बॉल. 118 पर 5. 118 for 5. रिक्वायर्ड रन रेट अब 13 के ऊपर जा चुका है. 23 गेंदे 53 रन. लेकिन ऐसे देखें तो फर्क केवल 30 का. 5 कमजोर गेंदे चाहिए जिसको मैदान के बाहर भेजना होगा. वाइड बॉल. वन 119 for 5. एक और वाइड बॉल. 120 for 5. 23 balls and 50 to win. 10 वाइड रन. पहली पारी में 15 वाइड रन थे. अब तक 10 वाइड रन दिए जा चुके हैं. एक रन और. स्कोर 121 for 5.
इस बार बेहतर बॉल थी और समीर शाह ने वहां पर बदला ले लिया। स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 6 क्लीन बोल्ड कर दिया। स्मिथ शाह के रक्षात्मक खेलने की जो जेड सिक्योरिटी थी, वो जेड सिक्योरिटी से घुसती हुई गेंद जिपिंग थ्रू द डिफेंस ऑफ द बैट्समैन, ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये विकेट लिया सैम ने। सैम जिसने किया चक्का जैम 121 पर 6। स्मिथ शाह 43 रन्स। बहुत संघर्ष भरी जुझारू पारी। एसके स्ट्राइकर्स इस विजय के साथ 8 पॉइंट पर आ जाएंगे। ऐसे चिन्ह निर्माण होते हुए नए बैटर है मनीष। लेकिन विजय स्कोर के जितना करीब जाया जा सके वो कोशिश जरूर रहेगी यहाँ पर मनीष शाह और हर्ष संघवी की। 121 पर 6, 49 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अपील की गई थी इस बार। टप्पा खाकर बॉल पैड पर लगी, लेकिन बल्लेबाज का कद ऊंचा है और थोड़ा सा फॉरवर्ड थे। पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है अंपायर प्रथमेश आंगणे द्वारा। और इस बार बोल्ड स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 7 का पतन और मनीष शाह 0 पर आउट। और नए बैटर अब मेरे ख्याल से विलेश साड़वी को आना होगा। विलेश साड़वी बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी नीचे आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पायदान ऊपर शायद उन्हें भेजा जा सकता था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कोई सोच समझ कर विलेश के लिए लोअर बैटिंग ऑर्डर रखा है। लेकिन स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 7, समीर को मिलती हुई तीसरी सफलता। सैम, इसके पहले सैम के हाथ से एक कैच छूटा था, लेकिन उसके मलाल को अब कम किया है। स्किपर को बताया होगा कि देखिए मैंने आपको 3 विकेटें लेकर दी है, मैंने बल्लेबाजी में भी आज कंट्रीब्यूट किया है। सैम जिसने किया रनों का चक्का जैम, 121 फॉर 7। 17वां ओवर। ड्राइव किया 1 रन, 122 पर 7। सौ मिनट में अपने 20 ओवर को पूरा करने की चुनौती थी, और यह वजह है कि कविश मिहिर देखिए तुरंत दौड़कर जा रहे हैं सब अपने अपने पोजीशंस पर। अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष है। 3 ओवर 15 रन 3 विकेट। समीर पंकज शाह। Six. V Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. V for Vilesh. V for Versatile. Vilesh the Versatile. V Jewels 6 लगा दिया वाली भाई ने।
17 गेंदों में 42 रन, 4 बड़े 6 चाहिए। क्या विलेश साळवी 4 बड़े स्ट्रोक लगा पाएंगे? और अगर ये चेज हो जाता है तो ये भी एक चमत्कार रहेगा। 17 balls 42 to win. विलेश साळवी 2 balls 7. इस बार कटोरी लगी और ये कटोरी पर आने वाला चौका, वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। अचानक मैच में गर्मी लौटती हुई कवि जवेरी, एक 128 पर 7, वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। 132 पर 7, 38 की दरकार। वाली इस बार पंच करते हुए (133 for 7). हर्ष संघवी सामना करेंगे कविश जवेरी का। वाइड बॉल, 134 for 7। इस मैच में जान है, 13 चौके 2 छक्के लगे हैं, मतलब अभी भी वो पहली पारी से 2 4 और 1 6 पीछे है। अगर वो लग जाते हैं द जॉब इज डन। इस बार करारा प्रहार और बॉल मैदान के बाहर। ये लगा वी ज्वेल्स 6, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। हर्ष संघवी खतरनाक और खूंखार बल्लेबाजी, 140 पर 7, अब 30 की जरूरत। विलेश साळवी 4 बॉल 12, हर्ष संघवी 16 बॉल 20। अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट बचा कर रखा है दोनों बैटर्स ने। 11 वाइड, 140 पर 7, 13 गेंदे 30 रन। इस बार उठा दिया है, आउट होने का खतरा तो नहीं है। हर्षल शाह वहां पर गेंद को रोकने में मेरे ख्याल से ऋषित थे, ऋषित केतन शाह। 142 पर 7। I think it's 141 for 7. So 12 balls 29. 12 balls 29. दिया है, कैच होगा ऐसा लग रहा है। मिहिर शाह के हाथ में कैच आएगा नहीं। मिहिर की आंखों में सूर्य की किरणें। मिहिर परेशान, बल्लेबाज 2 रन लेकर अपनी जगह पर। 11 गेंदे 27 रन, 11 बॉल्स 27 टू विन। ये मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला हो सकता है। एक रन और वहां पर ओवरथ्रो का रन मिल नहीं पाएगा इस बार। 10 बॉल 26, 10 balls 26 टू विन। 16 का फर्क है, वही जो फर्क पहली और दूसरी पारी में। 2 चौका 1 छक्का या 2 6 1 चौका चाहिए ही चाहिए,
तब जाकर 170 बनेंगे। 10 गेंदे 26 रन, 10 balls 26 टू विन। वाली कट करते हुए रोकेगा कौन, ये लाख रुपए का सवाल। गेंद तेज जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा चुकी है। वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। होठों पे लाली, कान में बाली, होठों पे लाली, कान में बाली, रिश्ते में साली और बल्लेबाजी में वाली। इसका जवाब नहीं। वाली आया 148 फॉर 7। अब 22 रन और चाहिए। वाली इस बार खेला विकेटों के पीछे, इस बार भी कम से कम 2 रन मिल सकते थे ऐसा लगा, लेकिन वाली यस बैकअप करने के लिए अब जाकर कोई पहुंचा। 2 रन और। 8 बॉल 20, 8 गेंदे 20 रन। ये मैच बहुत क्लोज हो गया है। जिनके हाथ जेब में है वो जेब में ही रख रहे हैं, जिनके नाखून दांत में है वो दांत में दबा रहे हैं। वक्त रुक सा गया है, आसमान झुक सा गया है। 150 पर 7, 8 बॉल 20। और वाली ने इस बार हुक कर दिया, 1 रन और मिलेगा। 7 बॉल 19 रन, 7 balls 19 टू विन। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर संघवी अगर इस बॉल पर 6 मार देते हैं तो इक्वेशन टर्फ ब्लास्टर्स के फेवर में आ जाएगा। 151 पर 7, केवल 1 रन और 152, 7 विकेट पर 6 बॉल 18। समीर पंकज शाह 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। आप देख रहे हैं सौरीन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। वाली 7 बॉल 19, हर संघवी 19 बॉल 24। पहली पारी में 15 एक्स्ट्रा, दूसरी पारी में 13 एक्स्ट्रा। ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने। इकतीस रन की भागीदारी इन दोनों के बीच में। 14 चौके और 3 सिक्स लगे, 1 चौका कम लगा है और एक्स्ट्राज में वो 4 रन पीछे हैं। यानी कि 2 चौके लगाने ही पड़ेंगे इस ओवर में, 2 चौके या 2 सिक्स। और कभी जवेरी आखिरी ओवर लेकर आ रहे, कप्तान स्वयं चुनौती का सामना करेंगे। हर संघवी आड़े बल्ले से खेल दिया है, मिहिर के पास 1 रन। यहां सवाल यही है कि क्या वाली को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जा सकता था। 153 फॉर 7, 5 गेंदे 17 रन। पांच बॉल 17, विलेश साळवी। बहुत उम्दा गति परिवर्तन। 4 बॉल 17, 4 बॉल 17, बहुत बड़ा खतरा। इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, 3 बॉल 16 रन। हार्दिक शाह ने गेंद को रोका, 3 बॉल 16। इस बार करारा स्ट्रेट ड्राइव और इसके साथ ही 2 बॉल 12, 2 बॉल 12, दोनों बॉल पर अब 6 चाहिए। 2 बॉल 12, टन टना टन 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 टारा, 2 बॉल में चाहिए 12।
कितना करीब आ चुका है ये मैच। क्या जवेरी हर संघवी को 6 लगाने से रोक पाएंगे। 2 बॉल 12। हर संघवी अगर ये बॉल पे 6 लगा देते तो मैच जिंदा रहेगी। 2 बॉल 11। 2 बॉल 11। 2 बॉल 11। इस बार स्ट्रोक अच्छा नहीं था, 1 रन जरूर मिला है। 1 बॉल 10। 1 बॉल 10। एक बॉल 9 रन। 1 बॉल 9 रन। देखिए, जबकि सतीश इस पारी में भी 15 4 लगे और 3 6 लग चुके हैं, लेकिन एक्स्ट्रास पहला इनिंग में 15 थे, जिसके जवाब में एक्स्ट्रास है 13। इस बार उठा दिया है, चौका जरूर मिलेगा ऐसा लग रहा है। तेज कदम नहीं, वहां पर अब चौका रोका गया है ऋषित केतन शाह द्वारा, और तेज कदम भागते हुए वहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया है। कविश जवेरी नाराज अपने आप से, लेकिन आखिरकार एक बहुत ही करीबी मामला 163 फॉर 7 और 6 रन से इस मैच को जीत लिया है एसके स्ट्राइकर्स ने। एसके स्ट्राइकर्स 8 पॉइंट। अभिनंदन।
You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy. To post-match presentation ceremony of match number 11 under Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5. I am very happily introducing you to our presentation party where we have got Mamta Shah, our hydrating sponsor White Divine. We have got Bhavesh Shah representing Varsha Exports V Jewels, who are our sponsors for Boundaries. And then we have got Punit Shah, our proud committee member who is with us today. So first award of the afternoon, and I shall request Punit Bhai to do the honors. Catch of the match award, and catch of the match award goes to Dhwanil Shah. Dhwanil Shah, number 27. Trinity Entertainment, catch of the match award, Dhwanil Shah. A diving acrobatic attempt. Thank you, Trinity Entertainment. Now we shall request Bhavesh Bhai to come forward and give away Maximum Success Award, which is sponsored by Patni Opticians, and it goes to Rishit Ketan Shah. A very patient knock by Rishit Ketan Shah, batted for 16 overs, and he was the backbone behind the batting. Now I shall request Mamta Shah from White Divine to give away Team Player of the Match Award, which goes to Smeet Hiten Shah. This award is sponsored by Selfie Design. Selfie Design. We are thankful to Selfie Design and McMarise for sponsoring this award. Gaurav Bhai, if you could join us, please. Gaurav Bhai, proud owner of SK Strikers. Well, dear friends, there were two contenders for this award. There was Mihir Shah, who played brilliantly, a half century, again took wickets, and was a big force behind SK Strikers' win. There was also another guy, Samir Shah, Sam, who scored a quick 20 runs and took 3 wickets. And the organizing committee decided to give it in favor of Samir Shah, Sam.
Gaurabai will do the honors. The coincidence is man of the match is sponsored by SK. We serve since 1932. And winner is Samir Shah. A whirlwind 20 runs and 3 wickets. Thank you. So Samir, if you could have word with us. Samir, I think 2022 has started on a good note. When you come to bowl your first delivery, you get wicket. Or if the batter is facing the first ball, you allow him to face the music. How this transition or turnaround has happened for you? I think 2022 is always a good luck if you see. It's 22. Maybe this is a good luck which is coming with me. I hope it continues in future matches. There was a drop catch as well. But then how do you gather your energy to forget that and bounce back? I think I've learned a lot from this, that in future also we have been known to not feel well as a SK. But what we are trying to put away, if we are dropped the catch, doesn't matter, the match is lost. So let's get back to the field again with the positive moment to make sure that we cover up what we didn't. So that's why it was actually Smith wicket was, I was wanting for it with the catch which I dropped for the Smith catch. Yes. So that is what is unique thing about Samir. I would say just 2 words for Samir. खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ. खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ. पूछना है तो अपने ज़मीर से पूछ. 22 is the year of Samir Shah. Thank you so much. Keep playing and keep winning. Thank you. Now can we have Suchit Shah to have word with us, please? Suchit, so near yet so far. Just matter of 1-6. Just that 6. Well, this is a game of cricket, and congratulations to SK Strikers. They played well, they batted very well, they bowled very well, and congratulations to my players also. I'm really proud of how they played. Harish and Wali and Smith, they came back well. But it's a game of cricket, no hard luck stories. We'll bounce back. Well, thank you so much and wish you good luck for the remaining matches. What a turnaround in 1 week's time. You are like a Tata Motors share who shows the turnaround immediately and talk of the town. Kavish, what are the highlights and lowlights, if any, of this match? I would be saying the highlight would be the bowling on this wicket. Like we as a team, we thought we were short of 10 to 15 runs for sure. But as a bowling unit, we bowled brilliantly well. Started with Sahil and then Sam and Mir. Control it very well by taking wickets as well. For the first time, I have seen you coming to bowl around 13th or 14th over. Any particular reason? The spinners were doing very well. So was trying, and we need to complete the 5th bowler as well, where Nishit bowled really well with Hardik as well. So that's the reason I was backing myself for the behind. So SK Strikers, congratulations. Keep playing and keep winning. Keep doing surgical strikes. Thank you. So we come to the end of this match, and we shall be back live in a short while from now, where Kusum Warriors have won the toss. They will be batting first against MTM Riders, who will be bowling first. Till then, have your lunch and stay tuned. Bye.